Good afternoon, everyone. Welcome to the session. Welcome to the end game on network analysis. Like we are doing for every single year before the GATE exam, we are back with the end game. So sorry for the slight delay of 10 minutes due to my system issue. Okay, we are back now. So I hope I am audible to you. Is everything is fine? My audio video sabhi clear hai to batao ek bar. We can start the session then. So we have exciting problems on all the topics, and this session I'll try to cover each and every single topic. I mean जो network में जो topics है ना सारे topics का सारे questions उठा के we have selected the questions in a way. I have selected such that each question will cover or will revise the topics included in that particular. Okay, in most of the cases I have taken all the questions of all the topics in a way such that it will be hardly 3 to 4 hours of the time I'll be taking of yours, and I'll cover as much as possible. Okay, chalo, let's start the session. Let's start the session. So is it fine? Everything is okay? Just a minute. Just 1 minute, please. Okay, chalo, let's start the session. So this is about the new batch is going to start on Unacademy, that is for 24-25 aspirants. So the new batch has started on 28th Jan. So if you want to take the subscription without any delay, for 24-25 aspirants, I am saying you can start your journey of the GATE as early as possible. And yes, you can use the code for getting maximum discount on an academy subscription before the price rises by 10%. If you want to save that 10% and extra 10%, total 20% on GATE and ESE subscription, and also IRMS and CSE mains, you can take the subscription using the code Shankar10. Chalo, let's start the what we call the class without any delay. So as you know, network analysis के अंदर हमारे पास कौन सा topics है? Basic, network theorems, transient, टू पोर्ट नेटवर्क, एसी एनालिसिस. सो सभी टॉपिक का क्वेश्चंस आपके लिए मैंने लाया, एक बार आप देख सकते. सो आई होप इट इज विजिबल. नेटवर्क एलिमेंट्स का क्वेश्चंस, देन वी ब्रॉट किरचॉफ लॉस, देन नोड एंड मेश एनालिसिस का, एंड एनर्जी एंड पावर कैलकुलेशंस के लिए क्वेश्चंस है. सभी क्वेश्चंस तो है हमारे पास. सो ऑल वी नीड टू डू इज लेट्स स्टार्ट द जर्नी. ठीक है. सो लाइक दैट आई मेड द क्वेश्चंस ऑफ जस्ट आई एम जस्ट क्विकली शोइंग यू द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व टुडे. ओके, सो थ्योरम्स का है सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अदर थ्योरम्स का, देन ट्रांजिएंट का भी है. ओके, ट्रांजिएंट में we will be doing all the possible initial final values का second order. Quickly we can say it is the revision of the entire syllabus for you. Energy calculation, LC circuits, two port network का, then AC power pair, resonance, average power, RMS values, phasor का, लॉकस डायग्राम का क्वेश्चंस भी है. एवरीथिंग इज अवेलेबल. ठीक है. सो चलो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. So the first question is a basic question. It is based on the network elements. So before going to the question, let me quickly revise for 2 minutes what are the network elements available. So basic classification of elements ऐसा होता है: linear, non-linear, active, passive, unilateral, bilateral, time invariant, lumped and distributed. I hope you remember the things. ठीक है. Just quickly revising the things. So resistor में voltage current relationship is V equal to IR. Inductor voltage is L dA by dt, and the capacitor current is C dV by dt. So these are the basic linear, passive, bilateral elements we have, and when they are interconnected, what is the equivalent? All those things you should have that basics. Basically इसमें the elements and equivalents में one more important is star delta transformation. So keep these things in your minds. Let's start your first question for you. Already मैं तो K notes में सारे revision तो किया. So here we do the revision through problems. ठीक है.
कॉन्सेप्ट थ्रू प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेडी फॉर यू। ज्यादा टाइम नहीं देने चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। सो हर क्वेश्चन को 30 सेकंड टाइम देता हूं मैंने, इससे ज्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है तो छोड़ दो, आई विल ओनली सॉल्व इट सो दैट इट विल नॉट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। सो कमेंट कर सकते हैं आप लोग, व्हाट इज द सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द सी ए बी। अब सी ए बी निकालना, सी ए बी। टाइम अप, ऑप्शन बी बोल रहा है, ठीक है। सो वेरी फास्टली, बिकॉज इट्स बहुत बेसिक क्वेश्चन है ना। वन पैरेलल विथ वन इज 2 माइक्रोफैरेड and one parallel with one, you add them 2 microfarad, ठीक है। now listen here, 2 and 1 are in series, so what is the formula? 2 into 1 by 2 plus 1, that will give me 2 by 3, and this will be 2. So what is the CAB equal to? 2 plus 2 by 3, that will give me 6 plus 2 by 3, 8 by 3. So 8 by 3 will give me 2.67. Option B is the right answer. So let's move for the next question. First question हमेशा आसान होता है। ये क्वेश्चन को 30 सेकंड में कितना लोग आंसर कर सकते हैं? लेट मी चेक इट। 30 सेकंड पे इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, एवरी सिंगल स्टूडेंट मे बी एबल टू नो द आंसर अनडाउटेडली, बट कन्वेंशनली सॉल्व किया तो मैं कन्वेंशनली नहीं, 10 सेकंड के अंदर, 20 सेकंड के अंदर इस वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो हाउ यू विल बी सॉल्विंग इट, लेट अस सी। सो 4 रेजिस्टर्स 2 4 5 10 20 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर, ठीक है। मेरे पास 4 रेजिस्टर है, 2 4 5 10 20। सो ऐसा रेजिस्टर है तो ये सभी पैरेलल में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट क्या है? एनीबॉडी हियर हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन? लेट मी चेक इट। ऑप्शन ये बोल रहा है, ठीक है, लेट मी चेक इट। सो हियर 2 4 5 20, हमेशा इस वाला केसेस में मैं तो रेगुलर क्लास में टेक्निक बताया, आपको थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं। सो टेक द एलसीएम हियर इन द न्यूमरेटर। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 4 5 20? 20 is the LCM, so you can write this as 20 by 10 parallel with 20 by 5 parallel with 20 by 4 parallel with 20 by 1. What is the equivalent, sir? 20 by 10 plus 5 plus 4 plus 1 is the shortcut. 20 by 20 will give me 1 ohm. हो गया काम, ठीक है, राइट। चलो लेट्स मूव फर्दर। या थैंक यू उत्कर्ष, सभी लोग तो लाइक करो यार वीडियो को। राइट 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 राइट, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द शॉर्टकट, मैं तो बताया ऑलरेडी। सो 2 पैरेलल विथ 4 पैरेलल विथ 5 पैरेलल विथ 20, व्हाट इज द इक्विवेलेंट इज take the LCM of all of them. Here LCM is 20, so 20 by the something, 20 by something, I'm replacing it, and 20 by the total denominators will give you the equivalent. You can do step by step, it will take so much of time, ठीक है। Based on this there is one question here. ये तो नीचे गया क्या? अच्छा, आई एम सॉरी, बहुत नीचे गया तो इट मे नॉट बी विजिबल, ठीक है। सो प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इसको भी ज्यादा टाइम तो मैं नहीं देता हूं, चलो शुरू। सो नेटवर्क एलिमेंट्स का क्वेश्चन ही है ये सभी, ठीक है। सो द सर्क्यूट शोन इन द फिगर, द करंट इज आई इज रिप्लेस्ड बाय द शोन इन द फिगर। सो दोनों फिगर में करंट सेम होना चाहिए तो, ठीक है, आर नॉट का वैल्यू कितना होना चाहिए इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें दोनों फिगर में करंट मेरे को सेम आना चाहिए। सो दोनों फिगर में करंट सेम आना चाहिए तो क्या करना, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए। सेम होना चाहिए तो आपका आर नॉट का वैल्यू कितना, आपका आर नॉट का वैल्यू कितना होना चाहिए? एनीबॉडी हियर आंसर्ड? दो बार लाइक मत करना यार,
2 बार लाइक तो डिसलाइक हो जाएंगे ना, ठीक है। इज इट ओके? करण कुमार सेटिंग्स पे जाओ, वीडियो का क्वालिटी इंक्रीज करो, वीडियो का क्वालिटी पे एडवांस्ड पे जाके 1080 पे रखो, ठीक है। सो हियर फर्स्टली what is the R equivalent? 32 पैरेलल विथ 16 पैरेलल विथ 8। एक आसान काम क्या है भाई, 32/1 पैरेलल विथ 32/2 पैरेलल विथ 32/4, that will give me 32/7 as the equivalent resistance. Here what is the R equivalent? R naught plus 4R parallel with 2R parallel with R, because R naught is in series with the parallel combination of this. Here R naught plus, what is the LCM of this? 4R by 1 parallel with 4R by 2 parallel with 4R by 4. That will give you R naught plus 4R by 7. This must be equal to this resistance, that is 32/7R. 32/7R. सो इसके लिए मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन क्या सर? इसके लिए मेरा रिक्वायर्ड कंडीशन ये कितना होना चाहिए? R naught must be equal to 28/7R. 28/7R. That is 4R is the required. Option D. ठीक है, that is the required condition to get the answer. ठीक है, what is the value of R naught? R naught must be 4R. Then you get both of the cases में same resistance and you will get the same current. ठीक है, चलो next question. Read this question. Now this is based on the Kirchhoff laws. Just a minute. आपको भी पता है, इसमें डिस्कस करने के लिए ज्यादा नहीं. विदाउट नोइंग द केसीएल केवीएल यू विल नॉट बी सिटिंग इन दिस क्लास. केसीएल तो क्या बोल रहा है सर? द सम algebraic sum of currents leaving the node is equal to 0. इसका another form is the law of conservation of charge. Charge entering the node is equal to charge leaving the node. KVL तो ये बोल रहा है the law of conservation of energy or the algebraic sum of the loop voltages around the loop in a closed path, it is always equal to 0. हम हमेशा ये नोटेशन फॉलो कर रहे हैं हमारा नेटवर्क एनालिसिस में. करंट एंटर हो रहा है तो पॉजिटिव, लीव हो रहा है तो नेगेटिव फॉर एनी पैसिव एलिमेंट. सोर्स का करंट डायरेक्शन कैन बी एनीथिंग. Okay, so keeping these things in your mind, we will be doing the analysis of any node analysis, mesh analysis, KCL, KVL का problem. This is a basic KCL, KVL का question है. Again, another 30 seconds I am giving you. So already we are in the question number 4. ठीक है, total 40 questions है आप हमारे पास. I thought 4 hours time is not sufficient, but let us see. Initial questions are little what we call, they are not much lengthy. आसान questions ही है because they are the questions of the basics part. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकते हैं. सो लेट्स सी. इन द 12 ohm resistor draws a current of 1 ampere. What is the value of R? What is the value of R? ऑप्शन बी. ठीक है, चलो लेट्स सी. देखो भाई, ठीक है, by the what is the drop here? 12 volt. I don't think this color is good. विजिबिलिटी कैसा है ये कलर का? एक मिनट चेक कर रहा हूं. जस्ट अ मोमेंट. ये तो दिख रहा है ना सही से? ओके. सो करंट एंटरिंग हियर इज 2 एम्पियर. इसमें कितना जा रहा है? 1 एम्पियर एज पर एग्जामिनर. सो अकॉर्डिंग टू द केसीएल कोई भी नोट ले लो, द करंट एंटरिंग हमेशा इक्वल टू द करंट लीविंग. सो इसमें 2 एंटर हो रहे हैं, 2 जा रहे हैं. सो व्हाट इज दिस करंट बाय द केसीएल? 1 एम्पियर. I don't know this drop because 1 into R. So just take the loop equation. Negative से positive we take 12, positive to negative minus R is the drop, positive to negative minus 6 is the drop. So what is the R value?
12 minus 6 ohms. This is a very basic question, right? But just to test your बहुत basic elements का what we call network elements का इसमें क्या बोलते हैं KCL KVL का questions है, ठीक है? चलो let's start the next question. So let's do some questions based on node and mesh analysis, which is the heart of your network analysis. इस पे क्वेश्चन आने के लिए चांस तो है, ठीक है, नोड मैश एनालिसिस में. सो आपको भी पता है नोड एनालिसिस क्या होता है सर, KCL प्लस ओम्स लॉ. मैश एनालिसिस क्या होता है सर, KVL प्लस ओम्स लॉ. सो आपके पास एक पेन और पेपर रखो. केवल खाली बैठेंगे तो यू विल नॉट बी एंजॉइंग द क्लास. सो एक काम कर लो, एक पेन और पेपर हाथ में रख के whenever I give the question you start doing it. It is one kind of revision for you guys. आप लोग भी parallelly try कर लो, आपको एक साथ रिवीजन हो जाएगा such that it can revise your concepts in a better way. ठीक है, चलो. So the question here is in the below circuit V1 equal to 40 when R is equal to 10. V1 equal to 40 when R is equal to 10. Okay, when R is 0 what is the value of V2? ठीक है, एग्जामिनर तो ये इंफॉर्मेशन दिया हमको when V1 is equal to 40 when R is equal to 10. ये R वैल्यू 10 है तो उस समय पे मेरा V1 कितना 40. ठीक है सर. Then what is the value of when R equal to 0 what is the value of V2? Anybody here? PDF तो ट्राई करता हूँ संजय, मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ बट आई विल ट्राई. ठीक है, सो प्लीज गिव ए ट्राई हियर. कमेंट योर आंसर, कमेंट योर आंसर, प्लीज कमेंट योर आंसर. मैं तो वेट कर रहा हूं. सी बेसिक का क्वेश्चन हो सकते बट आपको पता है इसमें हमारा टेक्निक इज देयर. व्हाट इज द टेक्निक वी आर हैविंग हियर? Whenever you have a voltage source series with a resistance, parallel with a resistance, what is the what is the voltage you will be getting it here? 60 into 20 by 10 plus 20, that will give me 40. 20 parallel with 10 will give me 20 by 3. So what is the another equivalent of this network is 20 by 3 and 40 after the source transformation. ठीक है, here also 20 parallel with 5. what is the source transformation here? 100 and 5. ठीक है, and this is remaining network you draw as it is. ठीक है, now listen here. Examiner has given you a trick to waste your time unnecessarily. आपका टाइम unnecessarily वेस्ट करने के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया. इसमें सारे एलिमेंट का वैल्यूज आपको पता है एक्सेप्ट R. When R is 10 he has given V1. इससे कोई यूज ही नहीं है इस क्वेश्चन पे. When R equal to 0 what is the value of V2? Suppose when R is 0, R को शॉर्ट सर्क्यूट करो, what is the value of V2? ओके, V1 and V2 will be same. इसको कैलकुलेट करने के लिए प्रीवियस वाला इंफॉर्मेशन से कोई भी फर्क नहीं. ठीक है, कोई भी यूज नहीं है भाई. ठीक है, सो डायरेक्टली यू कैन फाइंड इट बाय नॉर्मल नोड एनालिसिस हियर. सो V1 इक्वल टू V2 ना, शॉर्ट सर्क्यूट किया तो V2 माइनस, ठीक है, अगर बिकॉज 20 by 3 आ रहा है ना, सो डायरेक्टली हियर इटसेल्फ विदाउट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ये वाला सर्क्यूट देखो, इसको शॉर्ट किया मैंने. ठीक है, ये पार्ट अप्लाई किया तो टाइम ज़्यादा लग रहा है. V2 by 20, ओके नो प्रॉब्लम. V2 by 20 प्लस V2 minus 40 by 20 by 3, ठीक है, प्लस V2 minus 100 by 5 प्लस V2 by 20 equal to 0. ठीक है, so take the LCM. V2 by 20, so 3 times V2 minus 120 by 20 plus 4V2 minus 400 by 20 plus again V2 by 20 equal to 0. L20 तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, 1 V2 3 V2 4 V2 1 V2 5 और 4 कितना 9 V2 इक्वल टू इस तरफ ले लो 520. अरे यार ऐसा नहीं आना चाहिए, मैं कुछ गलत किया क्या? 52 क्यों आ रहा है? आई एम सॉरी, मेरा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. कोई भी गलत किया क्या? 60 into 20 by 10 plus 20, 6 by 3, 2, 2 2 is 40, 20 parallel with 10, 20 parallel with 10 is 20 by 3.
सो V1 और V2 दोनों सेम है ना, V2/20, V2/20, एक मिनट में गलत किया, ये रेजिस्टेंस कितना 15 है ना, एंड दिस इज 20, आई एम सॉरी, एक सिली मिस्टेक तो हो सकता है। Here the resistance is, I am sorry, here what is the resistance value, 20, 20 plus 10 कितना होता है सर, 30। एक मिस्टेक किया मैंने, सॉरी 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 फॉर यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है चलो लेट्स कंटिन्यू, लेट्स कंटिन्यू। So 3V2 plus 6V2 minus 240 plus 2V2 minus 200 plus 3V2 equal to 0. How many V2s are there? 3 और 6 9, 9 और 5 14। ओके सो 580 आ रहा है, 589 5। अरे यार बहुत कैलकुलेशन, एक बार मिस्टेक हो गया तो ऐसा ही होता है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। सो नाउ इट इज इक्वल टू 40, एक कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने। सो व्हाट इज द आंसर, इट इज सेम 40। ठीक है, सो जस्ट कैलकुलेशन वाला काम है, इसमें कुछ नहीं। हियर मैंने एनालिसिस इजी करने के लिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प ले लिया, इसके बाद नॉर्मल नोड एनालिसिस ओनली, दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, दिस बाय दिस, ए माइनस ए बाय ए। यू कैन ऑल्सो रिप्लेस दिस 20 पैरेलल विथ 20 विथ सिंगल 10, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सो यू कैन डू इट इन योर ओन कन्वीनियंट वे। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यस ओके, एक बार कमिट मिस्टेक कमिट किया तो भी आप थोड़ा सा जान होना चाहिए, मैं भी ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, मिस्टेक नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, वंस आई कमिट ए मिस्टेक ऑलवेज, आई मीन मी और यू एवरीबडी, हमारा माइंड तो काम नहीं करेगा, सो थोड़ा सा जान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द गिवन सर्क्यूट द मेश करंट I1 I2 I3 निकालना चाहिए। ठीक है, a clever student don't calculate all, can you comment it, is it required to calculate all the currents? आप इंटेलिजेंट है तो एग्जाम पे आप टाइम सेव करना चाहिए तो I1 I2 I3 तीनों निकालना तो नहीं चाहिए भाई, क्या करना चाहिए बताओ। ठीक है चलो, वन नॉर्मली यू शुड अप्लाई द मेश एनालिसिस, बट मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके देखो, व्हाट इज दिस करंट, ये करंट क्या, ये I1 ऐसा आ रहा है, I3 ऐसा जा रहा है, सो कैन यू से I3 minus I1, yes or no? So first thing you should understand, I3 minus I1 equal to 2, so I3 minus I1 2 होना चाहिए, so 4 2, एग्जामिनर आपसे क्लेवर है, ये सारे ऑप्शंस में ऐसा ही दिया, so you cannot eliminate any option, but another thing you should see here,
you should see here is 1 2 3 4. So if you find I1, it is sufficient. No need to find I2, no need to find I3, or any one of them you find it, that is sufficient, you can answer it. ठीक है? So चलो let's solve further. ठीक है? So at this node, what is this current? I1. Okay. What is this current? See here. ये I1 है, ऐसा आ रहा है. I2 ऐसा opposite direction में आ रहा है ना, so I1 minus I2, because I2 is going like this, I1 is coming like this. इसमें भी I3 ऐसा आ रहा है, I2 ऐसा opposite में आ रहा है, so this will be I3 minus I2, and this will be 2 ampere. ठीक है? So here this current is I2, this current is, इसमें कोई करंट तो नहीं जा रहा है ना, I1, and here ये वाला करंट तो I3 है भाई. ठीक है? ये करंट तो I2. Now let's apply the loop equations and find the final answer. ठीक है? So by the loop equation, current enters from positive, leaves from negative. Current enters, so external big वाला loop में equation apply. ठीक है? So positive to negative, minus 2I1, negative to positive, plus 5, positive to negative, minus I3 equal to 0. So can I say 2I1 plus I3 equal to 5? I don't like to solve the entire problem. Let me check, is there any option which is satisfying this condition? 2I1 plus I3 must be equal to 5. 2 ones 1 plus 3 equal to 5. Perfect. 2 2s 4, 4 plus 3 is 7. ये सभी ऑप्शंस तो गलत है. ठीक है? So you can also check in that if you want, here the current is 2 amperes. Here I3 minus I2. I3 कितना? According to examiner 3 आया ना, 3 minus 2, ये इस पे 1 आएगा. ठीक है? इस पे I1 minus I2. That is in this direction you will get the 1. So I haven't solved the entire problem within, by using the options. With one step I am able to get the solution. Accepted? With one step I am able to get the solution. Okay? Chalo, let's move further. Right. Next question. Question number 7, again from the node analysis. So around 12 questions I kept from the basics. Then we will move for the network theorems. Okay? So generally people will feel the difficulty when you have the, what we call the dependent source. This is the question with dependent source present in the network. A circuit consisting of dependent and independent sources is shown in the figure. The voltage at the node 1 is, node 1 क्या है भाई? ये -1 है, तो the voltage at the node 2 कितना? ठीक है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है. So ज्यादा टाइम मत लेना, आप लोग आंसर कर लो. I hope you can do it. Yes, please try. Please try. Please give a try. दस सेकेंड टाइम हो गया. ठीक है? चलो. So consider the network circuit consisting of the dependent and independent sources shown in the figure. ठीक है भाई. So the voltage at the node 1 is -1. Okay. A node voltage -1. So what is the meaning? Suppose this is 1 ampere. Okay. This node voltage is -1 means, what is this node voltage? Is nothing but VR1 equal to -1. So here the current is flowing in this direction indirectly. 1 into 1 will give you 1 volt. ये करंट 1 एम्पियर ऐसा आ रहा है, ये करंट 1 एम्पियर ऐसा आएंगे, तो आपका I2 कितना होता है सर? 2 एम्पियर. सो 2 into 0.5, 2 into 0.5, 2. ठीक है? सो 2 into 0.5, 2 क्यों होता है? 2 into 0.5 is 1. And again for VR1, already you know the VR1 is equal to how much? The node 1 voltage ना, -1. So -4 is the answer. ठीक है? एग्जामिनर को क्या चाहिए? द वोल्टेज एट द नोड 2. आप डायरेक्टली बोल सकते ना, ये नोड वोल्टेज कितना होता है सर? Vx. व्हाट इज Vx मींस? सम ऑफ दीज वोल्टेजेस. सम ऑफ दीज वोल्टेजेस सर
-4 VR1, ठीक है, -1 -1, but 4 VR1, what is VR1 -1 ना, VR1 is -1 ना, minus of minus, +4 -2, अरे -4 VR1 -1 -1, 4 -2, 1, 2 is the answer. Right, 2 is the right answer, 2 is the right answer without much difficulty. You can take the node equation and do it. For example, this node voltage is V2 na, V2 minus V1, that is -1, V2 plus 1 by 1 minus plus 4 V1 by 0.5, V2 by 3 and 2 I2, you know the I2 value, ये substitute करके भी कर सकते, उतना तो करना ही नहीं चाहिए इस क्वेश्चन पे, because this node voltage -1 ना, so I understand the drop here is in the reverse direction पे -1, उल्टा डायरेक्शन पे -1, ठीक है. So VR1 is equal to -4, 4 VR1 is -4. So if you see this node voltage, this plus this, ये तो I2 है, तो I2 हमको बताया 2 into 1 is 1, so -1 and 4 -4 VR1, VR1 is -1, so -4 VR1 is +4. चलो क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है. So these are the questions based on the energy and power. What is the power formula? Integration of voltage into current, if it is for a finite duration or according to the signal given. If it is a energy is energy is integration of power, that is the integration of voltage into current. What about the power, sir? Average power is equal to energy dissipated per one time period, that is I square into R by T, that is IRMS whole square, whatever we have, that you study in the AC analysis generally. So according to the question given, we use the formula and find it out. So an electric heater draws 100,000 watts from 250 volts source, ठीक है sir, then the power drawn by the source from 200 volts will be how much? इतना आसान क्वेश्चन है, so please give a try. Power equal to VRMS whole square by R or IRMS whole square into R, ठीक है. Energy equal to integration of voltage into current IDT or integration of power PDT. P का equation can obtain by VI or I square R or V square by R depending on the question given by the examiner. So find the an electric heater draws 1000 watts, ठीक है. आंसर क्या? या करंट वाले डिपेंडेंट सोर्स से भी कर सकते परचेन, बट 2I2 दिया ना, सो सम क्वेश्चन डाउट तो है. सो 2I2 दिया ना, I2 तो पता है हमको 2I2 विल गिव यू 4 एम्पियर, सो ये करंट तो 4 एम्पियर, ये करंट तो 2 एम्पियर, सो ये 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है. 1 minute, 2 ampere is coming here, so 3I2 will come, so 3I2 is 6 ampere, 6 into 1 by 3, directly you can say 2, any method is okay. So ये 2 ampere है ना, ये तो 2I2 means 4 ampere, leaving will be 6 ampere, 6 into 1 by 3 is the answer, any method is fine, it is your convenience. Chalo, what is the answer you have given? Many people has given option B as the right answer, option A as some people given, so let me check what is the right answer. So very simple question hai, power P equal to, here voltage is given V square by R equal to V square by P. If nothing is specified, हमेशा assume it as a RMS value, कोई doubt ही नहीं है इसमें, ठीक है. So 250 into 250 by 1000 will give you the resistance value, ठीक है. So 62.5. Okay. Now what is the power? New power is equal to V square, 200 square by R value. R is how much? 62.5. Calculate it. 6 watt is the answer. बस ये क्वेश्चन तो मुश्किल नहीं, बट अभी तो क्वेश्चन आ रहा है ना, सो दिस यू शुड बी एबल टू डू इट. सो प्लीज गिव ए ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन. इसके लिए आप लोग चाहिए तो 1 मिनट टाइम ले सकते, 50 सेकंड दे रहा हूँ. Considering your time is very important, so give a try. 9th question of the discussion. So please give a try.
चलो, right, 1.739 is the right answer, option B. Okay, so the energy meter is connected here. Reading the question is the beauty of solving the question. हम हमेशा when you read the question always give enough time to reading the question. For reading the question give enough time so that you don't face any difficulty. ठीक है? सो एन एनर्जी मीटर इज कनेक्टेड टू एन इमर्शन हीटर कैसा काम करती है, सभी चीज ध्यान में मत लेना, ठीक है? एग्जाम को अभी हमको क्या चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है? इट इज अ रेसिस्टिव हीटर ऑपरेटिंग एट 230 वोल्ट्स एसी एंड 50 Hz पावर सप्लाई, सिंगल फेज सोर्स, रीड्स 2.3 किलोवोल्ट आवर इन 1 आवर, ठीक है? सो इट हैज कंज्यूम्ड द पावर ऑफ 2300 इन 1 आवर. टाइम तो एच में भी 1 यूनिट ले लिया, यही भी 1 यूनिट ले लिया ना, सो नेग्लेक्ट कर सकते. I2RT ले लो, इट इज योर कन्वीनियंस एनर्जी के लिए. टी तो दोनों में 1 है ना, आवर एंड आवर, सो नेग्लेक्ट करके पावर डायरेक्टली ले सकते हैं, ठीक है? इट इज गिवन एनर्जी बट आई एम टेकिंग द पावर बिकॉज आवर कैंसिल हो जाएगा हियर. इट इज इक्वल टू V square by R. सेम प्रॉब्लम, 230 स्क्वायर बाय R इक्वल टू 230 इंटू 230 by 2300. सो ये तो चलेगा. R का वैल्यू मिला 23. नेक्स्ट, नाउ इट इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ 400 वोल्ट्स पीक टू पीक. ठीक है भाई, ये 400 पीक टू पीक है तो पीक वैल्यू कितना होता है सर? 200. सो फॉर दिस सिग्नल व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू? इसका आरएमएस क्या होता है सर? 200, बिकॉज रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ ए वैल्यू, यू कैन स्क्वायर इट एंड चेक इट, इट इज वैल्यू इज सेम एज इट्स डीसी वैल्यू, दैट इज 200. ठीक है, इसका एवरेज तो 0 बट आरएमएस विल बी 200. चलो भाई, बिकॉज इट इज -200 प्लस 200. ठीक है, नाउ दिस हीटर इज कनेक्टेड टू ए स्क्वायर वेव ऑफ 400 volts peak to peak with the frequency. So when you are calculating the average power, when a periodic signal is given, we always find what we find always is the average power. Average power निकालने समय पे RMS वैल्यू मैटर करते हैं. RMS वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी का फायदा नहीं होता है भाई. सो फ्रीक्वेंसी फेज शिफ्ट में इट डजंट मेक एनी इफेक्ट. सो फ्रीक्वेंसी 50 दिया, 150 दिया, ऐसा कंफ्यूज मत होना चाहिए. द आरएमएस वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल. ठीक है, चलो लेट्स मूव. The power dissipated P is equal to VRMS whole square by R. .739 kilowatt. ठीक है, चलो let's move for the next question. Ready? So that is about the energy and power calculation wala problems. The next one is the equivalent resistance wala question. So let's solve a question from the equivalent resistance. ठीक है, चलो let's do this question. So if anybody able to do this question, I am very happy. You can give a try. नहीं है तो I will solve it and give you. So let's see. थोड़ा सा नीचे ला सकते हैं स्क्रीन. चलो guys, please try this question. Yeah, please try. It doesn't matter with the resistive or not. Actually, average power dissipated is always IRMS whole square into R. That is the even it is having the reactance, the resistive part only matters because it is watts we are speaking about, and RMS value is independent of frequency हमेशा. If you have Vm sin omega t, what is RMS? Vmax by √2. It is not depending on omega. I have taken 1 minute. Some people are getting doubts. I have taken RMS value only. What is the RMS value of the square wave? ये basic तो होना चाहिए आपके पास. If you have, just a moment, my dear friends.
if you have this kind of signal A minus A, this is your x of t. What is XRMS? It is equal to A. Because if you take x square of t, this will give me a square minus a का whole square क्या, फिर a square again minus a plus a का क्या, a square and so on. ठीक है. So इसका RMS value is suppose you take this as t by 2 and t 1 by t integral 0 to t x square of t dt. Okay, that a square will come out as a. Here it is independent of your time period or independent of the frequency. Okay, for this part this is this we have discussed in the class already. Chalo, let's solve this question. Sorry for the delay. Okay, how many questions? Total 40 questions हैं. ठीक है, 40 क्वेश्चन है भाई. हम तो 10 क्वेश्चन तो किया ऑलरेडी. So 25% of your time is done. 25% of your class is done. अगर 2 घंटे में क्लास हो जाएंगे तो I will be very happy, you will be very happy. 4 घंटे लगेंगे तो मैं 4 घंटा लेता हूँ, कोई दिक्कत. ठीक है. Equivalent resistance calculation. Okay, if you are able to do it, fine. Otherwise, I will do it. Listen here. इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना. So this वाला पार्ट, ये लेफ्ट साइड वाला रेजिस्टेंस ना, इसका R इक्विवेलेंट ले लो RX, इसका R इक्विवेलेंट ले लो RX. So what is your R equivalent? RX by 2. So आपका जॉब तो केवल RX निकालना, पूरा R निकालना नहीं चाहिए, RX निकालना चाहिए. So let me find that R. Let me find that R. Two square, 2 cube and so on. ठीक है. What is your RX? ठीक है. So if you have all twos, maybe you know that technique. Otherwise, no problem. चलो. Listen here. If you have something up to infinity, you cannot find the exact value. इस केस में क्या करना चाहिए? हम कुछ approximation तो करना चाहिए. So what sort of approximation I can do it here is, I just remove this part. I just remove this part. आप ही देखो, ये first figure देखो, 2 square, 2 cube and so on. If you remove the first part, just assume this part is not present. 2 square, 2 cube and so on. ये वाला पार्ट जो है ना, compared to the original network, ये वाला पार्ट जो है ना, this is equivalent to 2 times the original network. Yes or no? Original network में it starts from 2, but here it is starting from 2 square. Forget about this. ये वाला पार्ट को 2 square, 2 cube, 2 power 4 and so on. It is 2 times my original network. So it is 2 times my original network. इसका मतलब क्या है? यहीं पे I can take it as 2 times Rx. So here it is 2. This is also 2. And the remaining part I can replace, this whole वाला part को replace कर सकते 2Rx. Approximately, because infinity से एक निकाल देंगे तो answer will remain same almost. Yes or no? If you remove one also, it doesn't make much difference. It will be same as the original network, but 2 का जगह पे 2 square है. So original network is multiplied by 2 जैसा ले सकते हैं. ठीक है. चलो. Now what is the Rx value? 2 plus 2 parallel with 2Rx. ठीक है. So Rx equal to 2 plus 2 into 2Rx by 2 plus 2Rx. So ये वाला सॉल्व करो, आपको फाइनल आंसर तो मिलेगा. You can solve this further and can you somebody tell me the answer? Yeah, what is Rx?
1.61, ठीक है, then Rx by 2 1.61 by 2, ठीक है, राइट, थैंक यू। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा। Next question. This is also a question based on the equivalent circuits only. So balanced bridge वाला concept आपने apply किया तो you will be getting the answer. So let's give a try. Let's give a try. इतना time तो नहीं देता हूँ। चलो, give a try. So please try. RX तो 3.56 आया, आई एम सॉरी यार, थैंक यू, मेरे को भी ऐसा ही डाउट है। RX इक्वल टू 3.56, RX by 2 is 1.78। ओके, वैल्यू तो कैलकुलेशन तो आप लोग करके कितना आए तो उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Here, this network shown in the figure, okay. So R equal to 350. What is the REAB? Here, firstly, you can see there is a bridge. ये तो एक bridge है भाई, ये भी एक bridge है, ये भी एक bridge है, ये भी एक bridge है, ठीक है? नहीं तो छोड़ दो इसको, कोई दिक्कत नहीं। So when the bridge is balanced, R by R equal to R by R is satisfied here, here and here everywhere. So neglect कर सकते इसको, ये सभी वाला निकाल दो, ठीक है? This is also another question from the equivalence calculation. So बीच वाला रेजिस्टेंस निकाल दो, कितना मिलेगा आपको? ये निकाल दिया तो R एंड R सीरीज में आएगा सर 2R, ठीक है? Here ऐसा आएगा R R, ठीक है? एंड अगेन ये बीच वाला रेजिस्टेंस मैंने निकाल दिया, नहीं तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला निकाल दो, थर्ड ओपन किया, बस, ठीक है? बीच वाला रेजिस्टेंस निकाल दिया। नाउ क्या होता है सर, ये तो 2R, ये तो R by 2 एंड R by 2 ना R हो जाएगा, ये R by 2, R पैरेलल विद R, R by 2, R पैरेलल विद R, R by 2, R by 2, R by 2, R, R by 2, R by 2, R. So what is the R equivalent? 2R पैरेलल विथ, एक आसान मेथड मैंने ऑलरेडी बताया, डोंट कैलकुलेट एवरीथिंग हियर। 2R पैरेलल विथ 2R by 2 पैरेलल विथ 2R by 2 पैरेलल विथ 2R by 2, because R can be written as 2R by 2. न्यूमरेटर सेम है तो ऐड करो भाई, 1 plus 2 plus 2 plus 2, 2R by 7 is the answer. R का वैल्यू दिया क्या? 350. Then what is 2R by 7? 2 into 350 by 7, that will give me 100 as the equivalent resistance, right? ठीक है? See here, somebody is asking if some current is coming, ये पूरा current ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई. You should see, don't see only this line. You should see the impedance between the two elements. Impedance between the two elements. This is a short, but बीच में resistance तो है ना. हम यही से, suppose you have a short from here to here. In that case पूरा current ऐसा चलेगा, ठीक है? But ऐसा नहीं है ना, यही पे. Right, let's move. Equivalent resistance calculation में last question of the first chapter, so give a try. You need to find this current I.
30 तो बहुत कम लग रहा है। आप कुछ भी कर लो यार, सेम आंसर मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं मिस्टर एबी भी। ठीक है, सिमेट्री वाला कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते। चलो प्लीज ट्राई। टाइम अप। देखो भाई, हियर यू कैन अप्लाई स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, हो जाएंगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, स्टार डेल्टा में मेरे को कुछ दिक्कत है और अदर मेथड्स बताओ। ठीक है, मैं दे रहा हूँ। इस वाला नोड्स को ये भी लगाओ, ये वाला नोड को सी डी लगाओ। ठीक है भाई, ये बी और सी डी ले लो। नाउ इक्वी पोटेंशियल नोड वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई करो। ठीक है, सो इस जगह से देखो, पॉजिटिव टर्मिनल से देखेंगे तो ए और बी, ये और पॉजिटिव और ये का बीच में डिस्टेंस कितना, 1। नेगेटिव और पॉजिटिव और बी का बीच में डिस्टेंस कितना, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव से देखो, 1 आने के लिए पाथ क्या, यू शुड कम लाइक दिस, दिस इज 1, ये भी 1 ले लो, प्रिंटिंग मिस्टेक, 1 1 1 3। ओके, बी को आने के लिए नेगेटिव से पाथ क्या, 1 1 1 3। इसका मतलब क्या, कोई भी पाथ ले लो, इट इज सेम पर व्हाट वी कॉल ए एंड बी। आई एम नॉट सेइंग पॉजिटिव नेगेटिव आर सेम फॉर ए एंड बी। फ्रॉम पॉजिटिव से ए एंड बी आर लुकिंग सेम, फ्रॉम नेगेटिव से ए एंड बी आर लुकिंग सेम। इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल नोड्स। इसको हम क्या कर सकते हैं सर, शॉर्ट सर्क्यूट। द सेम थिंग इज एप्लीकेबल फॉर सी एंड डी ऑल्सो। सो ये दोनों को हमने शॉर्ट किया। ठीक है, अगर शॉर्ट किया तो अभी आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सो क्या होता है सर, 1 देन 1 1 3 1 1 3 1 1। what is the R equivalent, 1 parallel with 1, 3 parallel with 1 parallel with 3, 1 parallel with 1. So 1 by 2, here I can say 3 by 8 plus 1 by 2. How 3 by 8 sir, again 3 by 3, 3 by 3 ले लो, 3 by 8 हो जाएगा। So this will be 11 by 8। ठीक है, so the current I will be 11 upon 11 by 8, 8 amperes। चलो next question। right, 8 is the right answer, 8 is the right answer। चलो next question पर। in the super, so that finishes your first chapter of our discussion. Now we are entering into the next chapter, that is network theorems। so let's enter into the next chapter। ठीक है, नेटवर्क थ्योरम्स, वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू चैप्टर। सो थ्योरम्स के अंदर आपको क्या क्या है आपको भी पता है, सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, reciprocity theorem, and you will be having what we call Milliman's theorem and many other, but mostly the questions rotate between थेवेनिन्स, नॉर्टन्स, सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। बहुत सारे बार क्वेश्चंस तो इस पार्ट से आ रहे हैं, बट समटाइम्स आउट ऑफ द लक मिलीमैन से भी क्वेश्चन 2020 पे आया, एंड रेसिप्रोसिटी से भी क्वेश्चंस तो आ सकते, कुछ भी हो सकते, बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड पार्ट तो थेवेनिन्स, नॉर्टन्स एंड सुपरपोजिशन। and in fact while solving the questions of super maximum power transfer theorem also you need the concept of Thevenin's theorem। so इसलिए so whatever maybe they can give a question which is combined form of both the Thevenin's and maximum power transfer together। so these are main theorems you should concentrate compulsory। चलो let's start with the first question on superposition theorem। ठीक है, superposition theorem।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन। सो आप लोग आंसर कर सकते हैं, नन बी पॉसिबल, 1 watt, 3 watt, 1 or 3, 9 different different options है इसको. So please give a try. In the circuit shown in the figure, the power dissipation in the resistor R is 1 watt. R is 1 watt when only first source is acting alone, and it is 4 watt when the second source is acting alone. When both are acting simultaneously, what is the answer? So मैं तो options दे रहा हूँ, 1 plus 4 5, option B 3, option C 9, ऑप्शन डी 1. सो ट्राई प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूं मैंने, 10 सेकंड आपको टाइम दे सकते मैंने. चलो गिव ए ट्राई. ठीक है, हो गया टाइम. 3 ऑप्शन, ये सभी लोग गलत आंसर दिया, सभी लोग गलत आंसर दिया. यहीं पे आप ध्यान से देखो, पोलैरिटीज नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या पॉजिटिव नेगेटिव, पोलैरिटीज उल्टा दिया. सो द नेट विल बी अपोजिंग टू ईच अदर. यस भुवनेश्वरी, राइट आंसर 1. शंकर गलत आंसर. इट कैन बी 1 or 9 sir. नहीं sir, here only 1. What is the formula for overall P when two sources are acting simultaneously? Individual powers P1 P2 है तो overall power equal to sum of root of P1 plus or minus P2 whole square. ठीक है, आपको इस पे रूट P1 कितना होता है सर? रूट ऑफ P1 1 watt, P2 कितना 4 whole square. That will give you 1 minus 2. 1 minus 2 is 1, whole square is 1. Sir, why plus not taken sir? Plus क्यों नहीं ले लिया? Polarities reverse direction, reverse polarities दिया examiner, इसलिए we should not take the plus. They are opposing. He want to say that they are opposing. ठीक है, चलो. So please we should observe these minute things, then only you can answer it in a proper way. So चलो next question पर. सो ये भी सुपरपोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं, सुपरपोजिशन से सॉल्व कर सकते हैं. सुपरपोजिशन अप्लाई करके सॉल्व करना नहीं करना, इट इज योर विश, बट यू कैन सॉल्व बाय डिफरेंट मेथड्स. इट इज योर कॉमन सेंस. प्लीज गिव ए ट्राई. राइट. बताओ, हो गया टाइम? एनीबडी हियर? नो आंसर एट. चलो आई विल डू इट. थोड़ा सा so consider the following circuit. IS is given, I is given, VS is given. So 3 सभी 3 है. In the suppose circuit, Vs equal to 3, I equal to 4 ampere. What is the value of I when Vs equal to 12? ठीक है, क्या बात है इसमें? हम सुपरपोजिशन से कर सकते हैं एंड वी कैन डू बाय डिफरेंट टेक्निक्स ऑल्सो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है,
Let's take next page. 333 VSI. ठीक है, चलो let's do this question. Now what he is saying is Vs equal to 3, I equal to 4 amperes. So when Vs equal to 3, the current I is equal to 4 amperes. When Vs 12 किया तो what is the current? So firstly, if you replace the source, this is Vs 3 3 3, this is I1. ठीक है, what is your I1? Vs by 6. Next, if you connect here I and connect this 3 3 3, short circuit the source, what is the current you get? I2. I2 equal to, total current is I na, it divides equally into two parts by current division principle because both the impedances are same, so I by 2. ठीक है, so the total current I is equal to Vs by 6 plus I by 2. Okay, now this is given by examiner as Vs equal to 3. What is the answer? 4 ampere. When Vs equal to 3, I is equal to Vs by 6 plus I by 2 equal to 4. ठीक है, अगर Vs को मैंने 12 किया तो that is it is 3 times 4. ऐसा no, Vs को 12 किया तो Vs is multiplied by 4. The response due to Vs will also multiply by 4. The response due to Vs will be multiplied by 4, which will give you, what is that? Here the response will be 4 times Vs by 6 plus I by 2. Okay, 4 times Vs by 6 plus I by 2. Here you know, sorry, total current को IR ले लो because दो I है ना, so IR is equal to Vs तो आपको ऑलरेडी पता है, how much? 1 minute, यही पे मैं I निकलता हूँ, ठीक है. what is Vs? 3 by 6, so I is equal to 7. Is it okay? 7 by 2 is 3.5 plus this one, so substitute here also. Okay, then 4 into Vs is how much? 12 by 2 plus 7 by 2. That will give you how much? 4 into 12 by 6, 4 2s, 8 plus 3.5. ये तो गलत हो रहा है, कहाँ पे गलत किया? Just a minute. Vs by 6. Vs equal to 3, you got 4. From that I find I equal to 7. Now Vs equal to 12. What is your IR? 12 by 6 plus 7 by 2. Okay, 12 by 6 is 2 plus 3.5, 5.5. बट इतना करना क्यों? सुपरपोजिशन किया तो आंसर तो मिलेगा, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है. यस सर नो? इतना किया तो बहुत टाइम लग रहा है. सो इसको बहुत आसान से भी कर सकते हैं. लेट्स सी, इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? इज देयर एनी अदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? लेट अस सी. ठीक है, सो फर्स्ट वी गॉट द आंसर, इट इज इक्वल टू 5.5. 5.5 is the right answer by superposition. But generally exam पे मेरा suggestion तो ये है, don't apply superposition theorem if there is no need. When two sources are acting simultaneously, directly भी solve कर सकते हो, superposition का help लेना जरूरत तो नहीं है. ठीक है, so here how we can do the analysis is ये रेजिस्टर को नेग्लेक्ट करो. ठीक है, रेजिस्टर को नेग्लेक्ट किया तो ये करंट तो IS तो IS माइनस
ओके, जस्ट वन मोमेंट, आई एम चेकिंग अदर इजीएस्ट वे। ये इससे हो जाएगा, ये तो डिफिकल्ट तो नहीं है, बट इससे कम टाइम पे भी सॉल्व कर सकते, मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, छोड़ दो कुछ नॉर्मल नोड एनालिसिस से। माइनस आई वी बाई थ्री, वी माइनस वी एस बाई थ्री। ओके, चलो, here this is given as 4 ना। another method I am showing you, see here, ये 4 एम्पियर दिया एग्जाम, ठीक है। ये 4 है तो ये कितना होता है, 4 4 तीन कितना, 12। ऑलरेडी वी एस इक्वल टू 4 बताया एग्जाम, वी एस इक्वल टू 3 बताया एग्जाम। सो ये 12 है तो ये कितना होता है सर, ये 12 है तो ठीक है, दिस इज 3, दिस विल बी 9, ठीक है, 9 प्लस 3 12। सो दिस करंट विल बी 3 एम्पियर, ठीक है। ये 4 एम्पियर ऐसा जा रहा है, इसमें 3 एम्पियर हो रहा है, ठीक है। टोटल करंट मस्ट बी इक्वल टू 7 एम्पियर। So without any what we call the node superposition theorem by KCL, ये 12 है तो 12 बाई 3 तो 4 हो जाएगा। सो ये तो 3 एग्जामिनर दिया, ये 3, ये 12 है तो ये 9 होना चाहिए, 9 बाई 3 3। सो 3 प्लस 4 7 इज द IS, आई गॉट द IS वैल्यू, I got the IS value. The next case में what happens is 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 equal to 7. Okay, this is 3. You can neglect the resistor which is in series. This is 3, and this is how much I kept as per examiner. If you keep 12, what is this node voltage or what is this current is the question. ठीक है? So minus 7 V by 3, V minus 12 by 3 equal to 0. So from that also you can find it. Right, it is your convenience. So but generally I suggest you, whenever there is a, I mean, सुपरपोजिशन तो आंसर देती है बट इट विल टेक मोर टाइम। नॉर्मल नोड एनालिसिस से प्रॉब्लम हो जाएंगे तो हमेशा गो फॉर द नॉर्मल नोड एनालिसिस। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज बेस्ड ऑन द थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, चलो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। ठीक है, okay, I hope you have answered.
ठीक है, right? You need to find this current. This is the current I1. What is the question? Find for the circuit shown in the figure the Thevenin's voltage and Thevenin's equivalent. See, Thevenin's Norton's में तीन मॉडल है, आपको पता है. When network contains only independent sources, here VTH, IT, RSC, IT, ISC, RTH, you can find it easily. When the network contains नेटवर्क इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट सोर्स, देयर व्हाट वी डू, हम VTH निकलेगा, ISC निकलेगा, RTH के लिए VTH बाय ISC करेगा. नहीं है तो RTH इज ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ V बाय रेशियो मल्टीमीटर मेथड से हम निकल सकते हैं, कोई भी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस. So let's see for the circuit shown in the figure the Thevenin's voltage and the Thevenin's equivalent resistance between the terminals A B. ठीक है, चलो listen here. So what is the answer? Thevenin's voltage and resistance. ठीक है, RTH निकालने के लिए क्या करना, करंट सोर्स को ओपन सर्क्यूट करना, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, सो बिटवीन ए बी. सो व्हाट इज द RTH? अगर ये ओपन किया तो डिपेंडेंट सोर्स का फायदा ही नहीं होता है ना. सो आर रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज 5 पैरेलल विथ 5, 2.5. ठीक है, सो VTH के लिए क्या करना, सो फाइंड VTH हियर. Here even the source is present because it is in series with the current source, its value will not change. ठीक है, so by nodal analysis current is entering is 1, VTH by 5, VTH minus 10 by 5 equal to 0. Take LCM, minus 5 plus VTH equal to 0. VTH equal to 7.5. So RTH equal to 2.5. Chalo, next question. Right? Determine the Thevenin's equivalent between A and B. Determine the Thevenin's equivalent between A and B. So please comment fastly, try this question. This is comes under model 3 where you don't have any independent source. केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्सेस है तो RTH कैसा निकालना. डिपेंडेंट सोर्स है तो VTH एंड ISC 0 हो जाएगा. RTH इक्वल टू V बाय रेशियो. RTH इज इक्वल टू V बाय I रेशियो. Vx, this one is the Vx. I'm sorry, V print हो गया. Okay. Here केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्सेस है ना, इसमें VTH इक्वल टू ISC इक्वल टू 0. केवल और केवल डिपेंडेंट सोर्सेस है तो उस केस में क्या होता है सर, VTH एंड ISC तो 0 होता है. RTH कैसा निकालना सर, बाय यूजिंग मल्टीमीटर मेथड. इसके पहले वो बाय अप्लाइंग V एंड I रेशियो. इसके पहले आप बताओ, वोल्टेज सोर्स पैरेलल विद रेजिस्टेंस, डिपेंडेंट सोर्स, I can apply the source transformation. It will give you 300. 300 into 0.1 will give me 30 Vx. ठीक है, this is your Vx. Now here we should apply the external source and do the job. You can do by different techniques में, तो external volts apply करो. V, current I is flowing. What is RTH? V by I.
here V is equal to Vx. So 30 Vx can be written as 30 V. So this node voltage is V. If you apply by nodal analysis, ठीक है, by nodal analysis, current I is entering V by, ये तो 100 ना, V by 100, V minus of minus plus 30 V by 350 equal to 0. V by 100 so what is V by ratio equal to? That will give you 10.1. Calculation up करके check करो, ठीक है. This is the node analysis. 10.14 is the right answer. नहीं है तो एक मिनट ऐसा भी कर सकते, नहीं है तो without doing this node analysis. So here what is this? 30 V na, this is V na, so this will be how much? 31 V. Okay, how 31 V, sir? Because if it is V, this is also V only. This V S पे minus 30 V है, तो by loop equation I am saying that. ठीक है. So this current will be 31 by 350. Okay. So here the resistance of the dependent source is equal to negative direction में current जा रहा है, so minus voltage is 30 V by current is 31 V by 3. Here V is not volts, V is some voltage, ठीक है. So that will give me minus 30 into 350 by 31. ठीक है. ओवरऑल R चाहिए तो 350 minus 350 by into 30 by 31. Like this you do it, you get the same answer almost. (350 by 31 is the answer. This is another technique to measure the RTH without doing the node analysis. It is your convenience always. Chalo, next let's move for the maximum power transfer. Please wait here. Maximum power transfer mein there are different possible cases. DC case, AC case. DC case mein what is the condition required for the maximum power transfer? When the load is variable only, you can apply the theorem. When load is variable, what is the condition for maximum power transfer? RL must be equal to RS. And what in the AC case, what is the condition required for the maximum power transfer? AC case mein what is the condition required for maximum power transfer? Depends on the load and its variable. If load contains ZL contains RL and XL, if RL is only variable, what is the required condition? Root of RL square plus XL plus XS whole square. That is the required condition for maximum power transfer. If XL is only variable, what is the required condition? Is XS plus XL must be equal to 0. If both are variable, load must be complex conjugate of the source. These are the conditions required for the maximum power transfer for the DC and AC cases. So let's see the question based on this. So here I already told you, it requires the concept of both the networks, that is both the Thevenin's and also maximum power transfer theorem together. So let's see this question. So solve this question here, determine the value of R for maximum power transfer, and also you need to find the maximum power in the R. Find the value of maximum power in the R. Please give a try. Please give a try. So question number 18. We are almost half of the questions are done. Okay. 20 plus 20 total 40 questions are there. So just 1 hour is done. So maybe 1 more hour. Maybe by 5 o'clock class might be done. Hopefully.
So determine the value of R for maximum power transfer. Here क्या होता है सर? Firstly, ये निकाल के इसमें थेवेनिन्स कैलकुलेट करो, ठीक है? ये रेजिस्टर निकाल दो and find the Thevenins. What is V naught here? V naught equal to 2 volts. Voltage division principle say 100 V naught is equal to 200. Then here, what is your VTH? VTH equal to 200 into 40 by 10 plus 40. That is 160. RTH क्या होता है सर? अगर ये इस डायरेक्शन पे 5 वोल्ट्स को जीरो करो, देन V नॉट भी जीरो हो जाएगा. V नॉट जीरो हुआ तो 100 V नॉट भी जीरो हो जाएगा. 100 V नॉट जीरो हुआ तो इस डायरेक्शन पे देखो 40 पैरेलल विथ 10 आएगा. So 40k parallel with 10k, that will give you how much? 8k, right? 40 by 4, 40 by 1, 40 by 5, 8k. So what is the Pmax? Formula is directly V square by 4 RTH. ठीक है? So 160 okay, 0.8 बस, right? RTH equal to 8k and maximum power is 0.8. Chalo, let's go for the next question. So determine the value of the current source I for maximum power transfer. So value of R for maximum power transfer. This question is given in one of the paper, so इसको modify नहीं करना चाहिए मैंने, इसलिए same symbols लेके plot किया. Okay, so by common sense understand the meaning of that symbol. Actually dependent source na they should show with a rhombus symbol, but sometimes they show with circle also. But if variable is there, you assume it is a dependent source. ठीक है? This is 2 ampere. Okay, this is 2 ampere, 2i नहीं, ये तो 2 ampere, ये तो I. So this is a independent source, this is a dependent source. Symbol examiner दिया ऐसा, ठीक है? चलो, let's see. What is the value of R for maximum power transfer? Only R चाहिए ना, RTH निकालो हो जाएगा कहाँ? So this को 2 ले लो, 2 ले लो, I ले लो. This is a dependent source of I and current source को open circuit, voltage source को short. Find the value of R. यहीं पे RTH निकालो. इसके लिए आप एक्सटर्नली सोर्स अप्लाई करके कर सकते हैं, नहीं है तो डिफरेंट टेक्निक्स यू कैन यूज. मैं एक्सटर्नली सोर्स Vx Ix अप्लाई करके RTH इक्वल टू Vx by Ix, one method. Now here listen carefully, you take this in the this direction. What is the RTH? Two parallel with the resistance of this particular source. You see, examiner has given this current as I. What is this drop? 2I. Okay. If this is I, this is also I. Parallel में voltage is always same. If current is also same, it means the resistance is also same. Otherwise, you can say
parallel voltage is 2I. So what is the resistance of the dependent source is 2I by I, that will give me 2. So 2 parallel with 2 parallel with 2, 2 by 3 is the answer. नहीं है तो आप वोल्टेज कनेक्ट करके नोड एनालिसिस अप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपको सेम आंसर मिलेगा Vx by x equal to 2 by 3. So that is the value of the resistance required for maximum power transfer. Chalo, let's go for the next question. Question number 20, that is the half part. We are halfway through for your total course, that what we call the total session of the end game of network analysis. ठीक है, so chalo, let's start. In the circuit shown in the figure, the value of the capacitor C required for maximum power transfer to the load. Load के लिए maximum power transfer करना चाहिए, तो what is the value of C? ठीक है, please try this question. ये तो PYQ है. Chalo, please try. Okay, half of the class is done, half part of the class is done. We have half part more. ठीक है, आधा समय तो हो गया. Okay, chalo. In the circuit shown below, the value of the capacitor C required for maximum power to be transferred to the load. Load के लिए maximum power चाहिए तो what is the value of? Here it is a AC circuit. Okay, omega equal to 100. What is J omega L? J 0.5. Capacitor 1 by J omega C minus JXC ले सकते. ठीक है. So now for maximum power transfer, examiner ये पूरा load बोला ना, so the load must be complex conjugate of the source. So source is equal to 0.5. So my load impedance ZL must be equal to 0.5. So 0.5 must be equal to J 0.5 plus ये वाला, what is that? 1 parallel with minus JXC. J 0.5 plus 1 into minus JXC by, ठीक है. मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, सो J 0.5 बाई माइनस JXC. J square is minus 1, minus into minus plus. Okay, इसमें you make imaginary part 0 or make the real part, that is XC square by 1 plus XC square must be equal to 0.5, which means my XC must be equal to 1. What is the condition required? The total must be 0.5. Make imaginary part 0, the real part you equate to 0.5. You can take imaginary part and equate to 0 also, you get the same answer. So XC is how much? 1 by omega C is must be equal to how much? 1. So C must be 1 by omega, 1 by 100, that is 10 millifarad. ठीक है, चलो let's move for the next question. Right, this is a good question यार, आप लोग तो try कर लो. The remaining theorems, so reciprocity etc. based on this question you can do it. That will finish the second chapter of our discussion. So please give a try and tell me the answer. Okay, this is a good question. Please give a try. हार्डली आज तो क्या वेंसडे है ना, 3 दिन बाकी है आपके एग्जाम के लिए. सो जितना भी पॉसिबल है तो ट्राई दैट मच मैक्सिमम टू डू दिस इन दिस 3 days.
ऑप्शन बी बोल रहा है, सी बोल रहा है, सारे लोग गलत है इस क्वेश्चन पे, सारे लोग, एवरीबडी इज रॉन्ग हियर. This is a sort of MSQ. This is a sort of MSQ for you. So everybody has given wrong answer in this question. So let me solve the question for you. मैं तो solve कर रहा हूँ, ठीक है. Firstly, shall we try to find Z? Yes, we can find it, sir. By different techniques we can find. तो 10 ले लो, 10 ले लो, इसको Z connect करो, ठीक है. By reciprocity theorem, if you apply 50 here, you get the same current 1 here, ठीक है, रेसिप्रोसिटी से. सो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, ये दोनों 1 है तो ये 2 हो जाएगा. सो व्हाट इज योर इनपुट इम्पिडेंस? इट इज Z plus 10 parallel with 10, that is Z plus 5. बट आप देख सकते हैं, यही से देखेंगे तो Z plus 10 parallel with 10. But here what is the current coming to na? So from that can I say the input current, input voltage by input current will give you input impedance? Yes sir, that will be 25. So Z plus 5 equal to 25. What is your Z? Z is equal to 20. Z equal to 20. Now you can apply source transformation and cross check. Nahi hai to simplest technique here is substitute Z equal to 20 in all options. Z equal to 20 in all options. ठीक है, राइट. सेकंड ऑप्शन मल्टीप्लाई 2 बार आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, 25 by 5 plus 20, 25 by 5 plus 20, 25 by 25, 1 ampere. Here current division principle, total current is 5 into opposite resistance by total resistance, ठीक है. 25 by 25, 1 ampere. यही पे क्या सर, 3 into opposite resistance by total, 30 by 30, 1 ampere. Here parallel पे voltage same, 20 by 20, 1 ampere. So for this particular Z, all these options are correct because all of them are giving me same load current. नहीं है तो maybe normally by source transformation 1 and 2 are correct. 1 is correct because of R1 R2 same, V by 2 series with R by 2 say, and source transformation same, may I can say 1 and 2 are correct normally. But for this particular load, these two are also okay because they will also give you the same load current. ओके, सो आदित्य एंड दीक्षा तो राइट आंसर दिया ऑप्शन डी. बाकी लोग, सभी लोग तो गलत किया. सो व्हाट इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. इट इज ट्रू फॉर ऑल द केसेस. सो दैट विल फिनिश द व्हाट वी कॉल this particular chapter of network theorems. Now we are entering into the main important topic, that is galat ink select kiya. So let's move to the next important topic. ट्रांजिएंट, ठीक है. सो ट्रांजिएंट तो बहुत मुश्किल तो नहीं, बहुत ज़्यादा मॉडल्स तो है. इफ़ यू हैव अटेंडेड द रेगुलर क्लासेस प्रॉपरली, प्रैक्टिस इट प्रॉपरली, इफ़ यू अंडरस्टैंड ट्रांजिएंट, ये तो आसान है. बट सही से इफ यू डोंट नो द बेसिक्स और इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रांजिएंट प्रॉपरली, इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट द ट्रांजिएंट पार्ट फॉर अस नाउ. सो ट्रांजिएंट में जनरल मिस्टेक पीपल कहाँ पे करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन दिया तो मॉडल आइडेंटिफाई करना. मॉडल कौन सा मॉडल, आई मीन which particular type of problem it is. There are different type of problems available in transient. What are they sir? Source free circuit sir. Network में source निकाल दिया तो if the network में after switching action there is no source, the network is called source free network sir. इसमें क्या होता है sir, I of t equal to I naught e power minus t by 2, V of t equal to V naught e power minus t by 2 for RL and RC circuits, tau equal to L by R and RC for RL and RC circuits. RLC में we go by Laplace transform theorem. This is what we call क्या बोलते हैं, source free circuits. Next case में network with sources में initial final condition. So problem दिया तो ये ask only at 0 plus and infinity we should apply that particular appropriate circuit and replace inductor with a short, capacitor with a open, and vice versa depending on the switching time and replacing its equivalents. And second thing is d by dt वाला question. So dl by dt is vl by l
एंड डीवीसी बाई dt इज IC बाई C वाला क्वेश्चन तो आएगा. इसके अलावा द नेटवर्क विद सोर्सेस रेस्पॉन्स फॉर ऑल टाइम. इस केस में व्हाट इज द फॉर्मूला? फाइनल प्लस इनिशियल माइनस फाइनल e power minus t by tau is the standard equation to find the response. RLC or second order circuits में we always go by for the response using Laplace transform approach. ठीक है. So these are the things. इसके अलावा स्पेशल केस होता है. पल्स दिया तो क्या होता है, मल्टीपल स्विचेस नेटवर्क में प्रेजेंट है तो क्या होता है, ये सभी चीज तो हम रेगुलर क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया. सो फर्स्ट थिंग पीपल विल फाइंड द डिफिकल्टीज identifying the model, which particular model question it is given by examiner, you should be able to identify. नेक्स्ट डी बाई डी टी वाला कैलकुलेशन क्वेश्चन आएंगे. तो व्हाट इज द फॉर्मूला? VL इक्वल टू L di by dt. Always d by dt we find with the help of relation only. ठीक है. Impulse वाला conditions, when there is a violation of KCL KVL you get impulse response in the network. in इस केस में you should solve the network by Laplace transform approach. इस वाला क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड किया. सो ज्यादा टाइम कोई भी क्वेश्चन तो सॉल्व मत करना, आपका टाइम वेस्ट मत करना. इस वाला क्वेश्चंस पे चांसेस है इफ यू आर डूइंग और सॉल्विंग द क्वेश्चन फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग ड्यूरेशन. इसका मतलब क्या? आप कोई गलत कर रहा है, थोड़ा सा सोच लो कहाँ पे गलत हो रहा है. ठीक है. सो मे बी यू आर कमिटिंग सम मिस्टेक, सो बी केयरफुल. या डेफिनेटली आ सकते ना, MSQ में नेटवर्क का क्वेश्चंस तो आ सकते, कोई भी सब्जेक्ट का आ सकते, ऐसा नहीं. ठीक है. ESE का नहीं, गेट का. चलो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर ट्रांजिएंट सर्क्यूट RL सर्क्यूट का क्वेश्चन है. आप लोग तो आसान से कर सकते हैं, आई होप. Please give a try. So question number 22, 18 questions more to complete this series, guys. So question number 22. So please solve it. So please try. Give a try. Tell me. So transient का क्वेश्चन भी कम समय पे आप लोग तो सॉल्व कर सकते, कोई दिक्कत की डाउट ही नहीं है. प्लीज गिव ए ट्राई. चलो 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 चलो. व्हाट डू यू हैव टू फाइंड? नहीं दिया? अरे यार ऐसा क्यों हुआ? सॉरी. Okay, find IL of t for t greater than equal to 0 if the switch is opened at time t equal to 0. So all transient question पे ये story तो same है. Just before switching action, assume independent source connected to the network for a long time. Network is in steady state. Network is in steady state. So here this is 56
दिस इज 8, स्विच इज क्लोज्ड, ठीक है, 8 32 और 32 इंडक्टर एक्ट्स एज ए शॉर्ट, इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं आपने, ठीक है। सो 8 पैरेलल विथ 8 इज 4, 4 + 6 10, सो 50/10 5 एम्पियर आएगा। सो इसमें करंट कितना 2.5, बिकॉज दिस इज 8 and the remaining is also 8. So the total current will be, what is that, 2.5 is the initial current in the inductor. I of 0 minus equal to I of 0 plus. Now for t greater than equal to 0 ये वाला स्विच तो निकाल दो, निकाल दिया तो आपका R इक्विवेलेंट क्या होता है सर, R इक्विवेलेंट यही से देखो 32 पैरेलल विद 32, 16 पैरेलल विद 16 8, L इक्विवेलेंट 2, tau इक्वल टू L इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट 1/4, ठीक है। सो व्हाट इज योर IL ऑफ t, I naught e power minus t by tau, that is e power minus 40, 2.5 e power minus 40. Next, so this is a beautiful question, so please give a try. It's a very good question. I mean, it is not at all difficult, but little common sense आपने apply किया तो you will be able to do it. ये भी फर्स्ट ऑर्डर सर्क्यूट का क्वेश्चन है, RL एक सिंगल इंडक्टर का क्वेश्चन है। चलो, now the current response of a series RL circuit to a unit step voltage is given in the table. The value of L is, ठीक है, firstly what is the response formula, IL of t equal to IL of infinity plus IL of 0 minus IL of infinity into e power minus t by tau, that is the final value plus initial minus final e power minus t by tau is the general response for the RL or RC, the first order circuits with the source. इसमें आइए if source remove किया तो infinity 0 हो जाएगा, source present है तो initially u of t unit step बोला ना, before 0 there is no response, इसको 0 कर सकते। so what is your response here is IL of infinity into 1 minus e power minus t by tau for t greater than equal to 0, ठीक है भाई। so what is your IL of t, this is the equation, this is the response. Now listen here, what is IL of infinity, if you see RL circuit, this is the circuit, voltage source is connected to the resistor and inductor. What is the steady state response, what is I of infinity, V by R, because L तो in G short circuit हो जाएगा ना, V by R is 1/R, that is given by examiner as 0.5, ठीक है। so R value कितना 2, ठीक है, then L value चाहिए। so what is at time t equal to tau, what is IL of t, IL of infinity into 1 minus e power minus t by tau, tau and tau cancels, e power minus 1, minus 1 is 0.368, 1 minus 0.368 is 0.632, so 0.5 into 0.632, that will give me 0.316, that is obtained at time t equal to 0.5. so I can understand that at t equal to 0.5 is my time constant, so 0.5 is equal to L by R equal to, what is that, sorry, L equal to so L equal to 0.5 into R, that is R value is 2, 1, 1 is the right answer. How many of you are able to comment it? R equivalent चाहिए ही पे, switch open किया तो 8 series 16 है ना, 30 to 32 parallel 16, 16 parallel with 16, 8 is the answer. After opening the switch you should find R equivalent.
सो क्या हुआ, कमेंट नहीं कर रहा है, एक ही आंसर दिया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ट्रांजिएंट आएंगे तो सभी लोग साइलेंट हो जाएंगे क्या? These are the topics where you need to score. Okay, so transient में थोड़ा सा और एक्टिव होना चाहिए भाई, ज्यादा टाइम नहीं, हार्डली मैं तो 23rd क्वेश्चन किया, 17 क्वेश्चन तक आपका एनर्जी पुश करो थोड़ा सा, हार्डली आई रिक्वायर मे बी 1 आवर ऑफ योर टाइम, मे बी 5:30 के पहले क्लास तो हो जाएंगे, ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बट आपका एनर्जी कीप इट सस्टेन्ड, बिकॉज आप एग्जाम पे भी 3 घंटे एनर्जेटिक होना चाहिए भाई। सो लेट्स कंटिन्यू, सो रेस्पॉन्ड रेस्पॉन्ड फास्ट, ठीक है। इसमें कैलकुलेट तो ज्यादा पार्ट तो नहीं यार, मैं जनरली वी कैन सी एंड टेल द आंसर। हियर L of infinity is 1/r, 1/r equal to 0.5, r equal to 2, डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं। Then what at time t equal to tau, the response is 63.2%, that is of final value, 63.2% of final value is 0.316, so this is the tau, डायरेक्टली देख के बोल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। चलो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, थियरेटिकल वाला क्वेश्चन है, सो 10 सेकंड 5 सेकंड टाइम दिया तो आप लोग आंसर कर सकते हैं, सो प्लीज एक्टिवेट अगेन योरसेल्फ। चलो रेडी रेडी, so 10 second का टाइम है, just read the question, answer it, read the question, it answer it, that much simple question. What should be done to find the initial values of the circuit variables in the first order RC circuit excited by some initial condition? Replace capacitor by short circuit, replace capacitor by open, replace capacitor with voltage circuit source and capacitor with current source. What is the right answer? टाइम देता हूँ, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। लैपलेस चाहिए तो यू कैन यूज इट, कोई दिक्कत नहीं, लैपलेस से भी सेम आंसर आएगा। यस, ओके, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या? वोल्टेज सोर्स सीरीज विद द कैपेसिटेंस, सो रिप्लेस द कैपेसिटर विद अ शॉर्ट सर्क्यूट, ठीक है, that is replacing the capacitor with a voltage source of initial value is what we need to do, ठीक है, at time t equal to 0 plus initial value बोला ना, ठीक है। Now the questions based on the initial and final values, so this is an important model, okay, important model है भाई, ठीक है, थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंस दे दो, so try this question, मे बी आपके लिए इस क्वेश्चन को आप लोग पूछ रहे हैं, सो टाइम दे रहा हूँ 1 minute, गिव ए ट्राई एंड सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व। somebody asking the question from long back, 32 को नेग्लेक्ट नहीं किया भाई, 32 पैरेलल विद 32 16 है ना, 16 ले लिया मैंने, बट व्हेन while finding the current, inductor acts as short circuit at the steady state, when it comes short across 32, शॉर्ट में करंट पूरा जाएगा, 32 पे कोई करंट नहीं चलेगा, इसलिए मैंने नेग्लेक्ट किया, ठीक है। आर इक्विवेलेंट में आई हैव नॉट नेग्लेक्टेड द 32, ओके, लेट्स गो, और थोड़ा पानी लाना चाहिए। Ready? In the below network, the switch key is opened at time t equal to 0. Okay. K close किया तो कोई response ही नहीं है ना, don't find the initial value. When switch is closed, there is no response. At time t equal to 0 plus. Okay. Now
कैपेसिटर का इनिशियल वैल्यू कोई नहीं, बिकॉज स्विच क्लोज्ड एंड ओपनड एट 0. 0 प्लस में कैपेसिटर सिंपली ब्लाइंडली रिप्लेस्ड विथ ए शॉर्ट सर्क्यूट, replaced with a short circuit. ठीक है, so this is IC of 0 plus and VC of 0 plus, VR of 0 plus. ठीक है, VR और VC और V पैरेलल पे सेम है भाई. एग्जामिनर को क्या चाहिए? dV by dt. So here what is this current? 10. So what is dV by dt? IC by C. पैरेलल पे वोल्टेज सेम, VC और V से. ऑप्शन सी. ठीक है, एंड गेम का टाइम टेबल चाहिए. टुमारो डिजिटल इज देयर. ओके, इफ यू वांट आई कैन रीड शाउट, आई कैन रीड लाउड, बट आई डोंट हैव दैट स्लाइड. मेरा मोबाइल पे है, तो मेरे ग्रुप में आई विल शेयर इट. आई फॉरगॉट टू ब्रिंग इट हियर. सो एंड गेम का टाइम टेबल चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं. ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू, लिसन हियर. टुडे February 1 है ना, सो नेटवर्क थ्योरी का क्लास है अभी. कल तो पावर सिस्टम, सुबह तो अंकित सर आएगा, शाम आफ्टरनून एज यूजुअल आई विल कम, एंड आई थिंक इवनिंग सिग्नल्स एंड सिस्टम मनीष सर विल कम. सेम एवरी डे. मॉर्निंग तो अंकित सर पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल द क्लासेस तो कंप्लीट करेगा. आफ्टरनून टुडे टुमारो मेरा सब्जेक्ट तो हो जाएगा. सो टाइमिंग्स विल बी सेम, 9 to 1, 2 to 6 एंड 7 to 11. 6 का मतलब इट में कंप्लीट बाय 5 itself, इट डिपेंड्स. ठीक है, चलो लेट्स कंटिन्यू. सो टुमारो का क्लास में बोल सकते, टुमारो तो पावर सिस्टम सुबह 9 बजे, एंड आफ्टरनून माय क्लास डिजिटल सर्क्यूट एट 2 PM एंड 7 PM सिग्नल्स एंड सिस्टम. इतना तो पता है मेरे को. चलो लेट्स डू द सेम मॉडल. वन मोर क्वेश्चन, अगेन dV by dt का क्वेश्चन है, एंड अगेन dV by dt का क्वेश्चन. सो प्लीज गिव ए ट्राई हियर. सो प्लीज गिव ए ट्राई हियर एंड आंसर द क्वेश्चन. 30 seconds more. टुडे इवनिंग एप्टीट्यूड आई डोंट नो यार, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. ठीक है, मेरे पास इसका इंफॉर्मेशन नहीं है. आई एम नॉट श्योर, आई डोंट नो दैट. ओके, time up. So the circuit shown in the figure, steady state, the switch is closed at time t equal to 0. 26th question, 14 questions more, 25 questions तो complete किया हमने. So the switch S is closed at time t equal to 0. What are the values of V and dV by dt at time t equal to 0 plus? ठीक है, पहले जीरो के पहले टाइम t equal to 0 minus independent source connected to the network for a long time, network is in steady state. ठीक है भाई, स्विच तो ओपन पे है. So this is 2 ampere, 2 ohms and the capacitor. Okay, and steady state में inductor acts as a short, capacitor acts as a open circuit. ठीक है, चलो now this is the circuit ना. हाँ, ये तो 2 ampere I naught current in the inductor, and this is the voltage across the capacitor. So ये 2 तो आ रहा है, 2 2 4, V naught will be 4. ठीक है, so now listen here. कहाँ पे है अभी? हाँ, now for t greater than t equal to 0 plus, t equal to 0 plus, ये तो 2 एम्पियर, मेरा स्विच तो क्लोज हो गया 2, एंड इंडक्टर तो है और कैपेसिटर भी है. कैपेसिटर का इक्विवेलेंट क्या? वोल्टेज सोर्स सीरीज विद ए शॉर्ट सर्क्यूट. इंडक्टर का इक्विवेलेंट करंट सोर्स पैरेलल विद ए ओपन सर्क्यूट. करंट सोर्स का वैल्यू 2. ठीक है,
कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स का वैल्यू, right? So what is that? Find the values of V and dV by dt. What is V of 0 plus 4? dV by dt के लिए आप IC निकालना चाहिए. IC के लिए ये 2 है तो पैरेलल पे वोल्टेज तो सेम है ना, 4/2 will give you 2. 2 is entering, 2 is leaving. What is the current? 0. IC तो 0 by. So what is dV by dt? IC of 0 plus by C. So 4 and 0 are the right answers. So answer can be 0, but find the value of IC and then only we should decide. Sometimes they ask you d square I by dt square. मैं तो मेरा रेगुलर क्लास में वो फॉर्मूला भी बताया, प्लीज याद करो, d square by dt square or any other d by dt by using 1 d by dt also I have given using relations we should find it. Directly don't substitute any time the value, you should find the रिलेशन से बाकी डी बाई डी टी. सपोज हियर डी आई आर बाई डी टी चाहिए तो एग्जामिनर को कैसा निकल सकते सर? यू शुड फाइंड डी आई एल बाई डी टी and also DIC by dt and this d by dt. From that you can find this di by dt. Like that we do that by relations in general. मैं तो regular class में बताया वो. So question number 27 again di by dt तो है. So initial final conditions का question है. So please try. एक मिनट यार, बहुत हो रहा है. एक मिनट pause ले लो. So let me explain the question, then I'll give you time. So in the circuit shown in the figure, the given the switch is moved from position A to position B. A पे है भाई, मेरा switch B पे move हो गया, ठीक है. Now it's looking good ना. अच्छा ठीक है. Switch is moved from position A to position B at time t equal to 0. Right, the current I through the inductor satisfies the following conditions. I of, this is the direction of the I given by examiner. This is the direction. This is given by examiner only. So I of 0, what is the condition? I of 0 equal to minus 8. Di by dt at time t equal to 0 is equal to 3 amperes. And what is I of infinity? 4 amperes. The value of R value कितना हो सकते हैं? Okay, R value कितना, ठीक है. चलो मैं तो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया, आप लोग सॉल्व करो. नॉट ओके, ऑप्शन बी. वेट 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 वेट, प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ गलत किया मैंने. एक मिनट यार, 4 and 2 तो आ रहा है, नहीं आ रहा है. हाँ मैं तो करेक्ट. Come on, 20 seconds more. चलो. In the circuit shown in the figure, the switch is moved from position A to position B at time t equal to 0. ठीक है. 1 minute. There is a problem in the question. There is a source here. Otherwise, the question is no meaning na. Without source, how do you get 4 ampere? Okay. मेरा टाइपिंग में सही से नहीं हुआ.
वो टाइपिंग वाला गलत है. Right. So what is I of infinity? ठीक है, I of 0 equal to -8. Okay. What is the formula for I of t? Final value plus initial minus final e power minus t by tau. You know this. Okay. Final value plus initial minus final e power minus t by tau. Now listen here. What is here this value 4 minus 12 e power minus t by tau. What is di by dt? D by dt of constant 0 minus into minus plus 12 by tau e power minus t by tau. Now, what is di by dt? What is di by dt at time t equal to 0 plus? Time t equal to 0 plus, its value equal to 12 by tau. Because time 0 substitute kiya to. This is given by examiner. This is given by examiner as 3 ampere per second. 3 ampere per second. Then what is your tau? 12 by 3. 4. Tau is equal to L equivalent by R equivalent is 4. What is your R? L by 4. L is kitna diya examiner? L equal to how much he has given? 2. 2 by 4. What is answer? 0.5. This is just one method of solving this question. ये question को बहुत different methods में भी solve कर सकते हैं आप. इस पे switch connect करके indirectly इसका equations निकाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. 0.5 is the right answer. Okay, option A 0.5. Option A 0.5 is the right answer. Okay, just given information so सही से use करो. Final दिया, initial दिया, I of t equal to final plus initial minus final e power minus t by tau. 4 minus 12 e power minus t by tau. di by dt equal to d by dt of constant 0, d by dt of this one minus 12 by tau e power minus t by tau. ठीक है, इस पे 0 substitute करके tau निकाला, tau equal to L by R, 2 by R. चलो next question. So here it is a second order circuit. Because why it is called second order circuit? It contains both the inductor and capacitor. So it is a second order circuit. So this is an impulse. Okay, so find the response. Vc of t. What happened, Utkarsh? 12 by tau e power minus. So what is the d by dt of this? Differentiation. Tau क्यों होता है d by dt into minus 1 by tau ना, into minus 1 by 2 यही पे आएगा. चलो try this question. Impulse वाला question, question number 28. Last 12 questions or more. 12 more questions. 12 more questions. राइट, ओके. ऑप्शन ये बोल रहे हैं, लेट मी चेक इट. इम्पल्स दिया तो हमेशा फाइंड द रेस्पॉन्स पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म. हियर आई ऑफ एस, व्हाट इज द लैपलेस ट्रांसफॉर्म? 1 by s 1 s 1. ठीक है, सो आपका vc ऑफ s चाहिए ना. vc ऑफ s इक्वल टू टोटल रेस्पॉन्स, टोटल वोल्टेज इनटू वोल्टेज डिवीजन प्रिंसिपल, दैट पर्टिकुलर इंपेडेंस बाय टोटल इंपेडेंस. 1 plus s plus 1 by s. So s 1 by s square plus s plus 1. इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या होता है सर? यू विल गेट द सॉल्यूशन ऑफ द इनवर्स लैपलेस ट्रांसफॉर्म. सो vc ऑफ s इक्वल टू 1 by s स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 into 1 by 2s, ठीक है, प्लस 1 by 2 होल स्क्वायर प्लस 3 by 2 होल स्क्वायर. ये क्या है सर? √3 by 2. Because
The same equation, one is written as 1 by 4 plus 3 by 4. 3 by 4 can be written as root 3 by 2 whole square. So this can be written as 1 by s plus 1 by 2 whole square plus root 3 by 2 whole square. Okay. Here multiply with 2 by root 3 and root 3 by 2. दोनों cancel हो जाएगा ना. So this will give me 2 by root 3 b by s plus a whole square plus b square. What is the inverse Laplace transform? E power minus at sin bt. ठीक है, e power minus 0.5 t sin root 3 by 2 t. Sin और cos? Cos ना? नहीं sin ओनली. Cos में s आएगा ना. Option D. D, very good, very good. Amit, Bhuneshwari, Air to Ransom and Arvind, Vipin, सभी लोग तो correct answer. ठीक है. So next question. So the next question is, the step voltage is applied to the circuit shown in the figure. The transient current response of this circuit is undamped, overdamped, underdamped or critically damped circuit. So please give it a try. Just if you remember the formula, you can say do it. Critical resistance वाला formula याद हिया तो you can do it. Very good. इतना time तो नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को. ठीक है. हाँ. Option D is the right answer. What is the condition required? R square by 4 less than L by C, underdamped. R square by 4 equal to L by C, critical damped. Overdamped. R equal to 0, undamped. Critical resistance equal to 2 times root of L by C. ठीक है. Here R square is 2 square by 4 equal to 1 by 4 by 4 equal to R square by 4 equal to L by C. What is this? Critically damped circuit. So question number 29 तो हो गया. 30th question. So 10 more questions. Last 10 more questions are there. इसके अलावा चलो, this is the next question. Energy calculation questions in the transient. Transient में energy वाला question है. Ten questions, maybe half an hour or 45 minutes more I will take. ट्वेंटी सेकेंड्स मोर. इतना टाइम तो चाहिए क्या? अरे ठीक है, टाइम ऑन. नो आंसर. शॉर्टकट है इस क्वेश्चन पे. इस क्वेश्चन का मतलब इस वाले क्वेश्चन पे. If you have a RC circuit directly connected to the source with initial value 0, you can apply this shortcut. ठीक है. What is the energy taken from the source is taken by two people. At steady state, what is the voltage across the capacitor you get after moving the switch here? ये 3 वोल्ट, यही पे आएगा 3. ठीक है. स्टडी स्टेट में VC of infinity equal to 3. Okay, fine. So what is the energy? E is EC of infinity equal to half C V square. ठीक है. 9 by 2 0.45 joules because it is in microfarad. But it is energy of capacitor only. But he asked energy of resistor also.
equal to ER plus EC. When VC of 0 equal to 0, in that case, ER will be equal to EC is the shortcut. By using that, it will be 2 times EC. It is not true if VC of 0 is given. So 2 times 0.45, 0.9 microjoules. This is applicable for the RC circuit when initial voltage across it is 0 and the total energy is asked. Then the energy taken by the resistor is equal to energy taken by the capacitor at the steady state. Okay, so to charge this capacitor with 0.45 microjoules, it will give, for this fellow will eat 0.45 microjoules. Okay, chalo, let's move. So क्वेश्चन नंबर 30 तो हो गया, 10 क्वेश्चन और है भाई. ठीक है, फटाफट कर लो. एलसी वाला सर्क्यूट. थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ. Right. In the network shown in the figure, the power consumed by the resistor remains unchanged at the time of switching. Okay, firstly, the value of current IM and the element X. Firstly, here, when you have this element L and this element is X, we don't know that element. So, when you have only resistor and inductor, the response is exponentially decaying because the energy of the inductor is taken by the resistor. RC may be same ho jayenge. But when you have both inductor and capacitor, what happens? The energy will be exchanged between them, and you can find the response will be sinusoidal or cosinusoidal. So inductor will give energy to the capacitor, capacitor will give energy to the inductor, undamped oscillations will occur. So when will you get this undamped oscillatory response? I of t equal to Im sin omega t, LC circuit में हो जाएगा. So this element X must be a capacitor, no doubt in it. Resistor तो निकाल दो. चलो भाई, अभी solve कर सकते हैं question. So time t equal to 0 minus, the switch is here, inductor is present here, the element X is present here, and 1 ampere and resistor R is there. Okay, and you can see here, Jan se suno, listen carefully. So this is IR. What is IR of 0 minus 1? What is the power in the resistor at the time of 0 minus? I square into R, that is R watt. According to the question, the power remains unchanged at the time of switching. Power remains unchanged at the time of switching. Okay, then, okay, fine. Similarly, what is the inductor current I? I of t equal to Im sin omega t plus 30 degrees. Then what is I of 0 plus? Im sin 30 degrees because t0, that is Im by 2. You know, inductor current cannot change instantaneously. So I of 0 minus equal to I of 0 plus for the inductor. Now, using this concept, if you plot the circuit at time t equal to 0 plus, ये तो 1 ampere resistance,
inductor is connected in this way. Now let us see what is the value of IR of 0 minus. ठीक है, you know IR of 0 minus equal to 1 minus IM by 2. Okay, पावर P R of 0 plus equal to 1 होना चाहिए according to the statement of the question. So IR square 0 plus into R 1 R. So IR square of 0 plus equal to 1. IR क्या होना चाहिए सर? Plus or minus 1, because power 0 same, current can be in the reverse direction also, but the power will be same. So if you take IR of 0 plus equal to 1, 1 equal to 1 minus IM by 2, which means IM is 0. There is no meaning for this question. If IR of 0 plus is considered as minus 1 equal to 1 minus IM by 2, IM equal to 4. Yes, this is the right answer. IM equal to 4. So what is the right answer? 4 ampere and the capacity. Okay, chalo, let's move for the next question. So अरे 2 बार 31 क्यों आया? ठीक है, सॉरी यार, नंबरिंग कुछ गलत. ओके, सेम क्वेश्चन आया, ठीक है. नाउ वी आर एंटरिंग इनटू ट्रांजिएंट. तो हो गया, टू पोर्ट पे एंटर हो रहा है. ठीक है, टू पोर्ट में ज्यादा क्वेश्चंस मैंने नहीं रखा, बिकॉज सारे को टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चंस तो कर सकते हैं, हर टॉपिक में 50 क्वेश्चंस रेगुलर क्लास में, बट हियर सारे टॉपिक्स तो कवर करना चाहिए. सो एक सिंपल सी क्वेश्चन टू पोर्ट में, द बेसिक नेटवर्क्स इन द टू पोर्ट नेटवर्क इज जेट नेटवर्क एंड वाई नेटवर्क. इसको इंक्लूड किया मैंने. सो प्लीज गिव ए ट्राई हियर. So determine the Z and Y parameters of the following networks. Tomorrow में electrical see tomorrow I will take the digital circuits का end game at 2 p.m. But see, I know for electrical engineering the topics available are combinational circuits, sequential circuits, data converters. So क्या करेगा मैंने, पहले electrical वाला बच्चों के लिए syllabus cover करके देन EC वाला exclusive topics लास्ट में डिस्कस करेगा, जैसे नंबर सिस्टम्स है, बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चंस है, और क्या लॉजिक फैमिलीज का, ये तीनों टॉपिक्स का लास्ट में आई विल कवर इट. बट स्टार्टिंग 2 PM पे जो क्लास शुरू होता है ना, उस समय पे आई विल कवर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों का टाइम क्लास, क्योंकि इट विल बी मोर क्लियर फॉर यू पीपल. यू विल नॉट बी वेटिंग फॉर व्हेन योर टॉपिक विल बी स्टार्टिंग, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं हो पाएगा. इसलिए आई विल स्टार्ट विद द कॉम्बिनेशनल सर्क्यूट्स टुमारो. ठीक है, चलो लेट्स डू दिस. हार्डली हमको 8 क्वेश्चंस बाकी है. सो व्हाट आर द Z एंड Y पैरामीटर्स? आप बताओ Y पैरामीटर्स क्या? जनरली रेगुलरली मिस्टेक तो ये करते लोग. Y पैरामीटर्स, इट इज ए पाई नेटवर्क. हियर Z T Z Y T T डैश H G का ऑल इक्वेशंस याद करो, मैं के नोट्स में दिया. रेसिप्रोकल सिमेट्री वाला कंडीशंस याद करो, मैंने दिया. इसके बाद 3 नेटवर्क इंपॉर्टेंट मैंने बताया. क्या क्या सर? टी नेटवर्क का Z पैरामीटर्स, पाई नेटवर्क का Y पैरामीटर्स, हाफ टी सेक्शन का ABCD पैरामीटर्स. इसके बाद इंटरकनेक्शन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क्स याद करो. इंटरकनेक्शन में क्या है सर? इफ टू नेटवर्क्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट टू डू? ओवरऑल Z parameters will be added. पैरेलल पे ओवरऑल Y parameters will be added. कैस्केडेड में ओवरऑल T parameters will be multiplied. सीरीज पैरेलल में H parameters, पैरेलल सीरीज में what we call G parameters will be added. ठीक है, इसमें Y parameters क्या होता है सर? फॉर्मूला क्या? YA plus YC. So don't take 20 plus 5. मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक हो सकते हैं. Here ohms नहीं, मोस होना चाहिए. माइनस YC YB plus YC. ठीक है, दिस इज द आंसर. Z चाहिए तो Y का इनवर्स आप घर पे कर लो. ठीक है, हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट, हियर यू नीड टू फाइंड द ABCD पैरामीटर्स. इस क्वेश्चन भी मैं करेगा ना यार, इसके बाद आप चाहिए तो आई मीन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. दिस इज अ इजी क्वेश्चन. Seven more questions. So this is a one network, another network, C network. You need to find the ABCD. So remember the standard network. ठीक है, ये स्टैंडर्ड नेटवर्क याद करो.
For this network, what are the T parameters? 1 plus ZA by ZB, ZA 1 by ZB 1. ये याद करके let's solve the question. So what are the T parameters of the first network is 1 plus ZA by ZB. 1 plus ZA is how much? 1 plus ZA by ZB. 1 by minus J is plus J. ZA 1 by ZB 1 is the formula. 1 plus J 1 J 1. Similarly, here also it is the same network now. What is the T parameters of this network? This is ZA, A ZB. One plus ZA by ZB, ZA 1 by ZB, 1 by infinity 0, and overall T parameters equal to product of individual. बस आप लोग कैलकुलेट तो कर लो. That's all. ठीक है, let's move for the next question. ठीक है. So 6 questions और बाकी है. Now we are entering into the next important topic. इतना साइज तो नहीं होना. हाँ. Okay. So next topic, AC analysis. ठीक है. Next topic, AC analysis. AC analysis के अंदर very good number of topics are available. Sinusoidal steady state analysis, resonance, magnetically coupled circuits, average RMS values, power calculations. इतना सारे topics तो है. Locus diagrams, filters, ये सभी comes under this AC analysis. So in the available time, let's cover at least one question from each and every topic so that you will be getting the revision. So let's start the next question. So AC में first we are doing the question from the power calculation. So power calculation में थोड़ा सा revise करेगा, it will be good instead of doing the problem directly. So power contains the real part, imaginary part in the AC case, and also the real active, reactive भी बोल सकते, and also the complex power. Okay, the power taken by the resistive part, that is V square by R or I square into the resistance of the network, will give you the what we call the active power. Same way, if you replace R with X, you will be getting the reactive power. The units are VAR, volt ampere reactive, and the complex power is P plus R minus JQ. We take plus for what we call lag and minus for the lead condition. S can also be taken as V into I conjugate. That is also fine. So for the circuit shown in the figure, the total real power delivered by the source. Here the examiner is giving you two currents. Okay, the input is 100 angle 0 degrees. ठीक है. So please calculate and tell me the answer. क्या वर्क का क्या डिलीट हो गया? Chalo, let's do it. So 10 seconds more. I feel the temperature is more now after, I think. Chalo, for the circuit shown in the figure, the total real power delivered in kilowatts. Okay, VRMS, IRMS, cos phi is the formula. Here,
फाई कितना 30 डिग्रीज, cos फाई कितना √3/2 0 पॉइंट, ठीक है. ओके, so what is the power taken by the load to P2? VRMS IRMS 0.866. What is that? VRMS IRMS cos phi, ठीक है. So that will give me 500 ठीक है. Here also 5 angle 0 degrees ना. Here the power factor is 0, phi angle phi is 0, cos phi equal to 1. So what is the power P1 here is VRMS into IRMS. That will give me 500. ठीक है. ठीक है. Here overall power equal to sum of total, that you can do. नहीं है तो ऐसा भी कर सकते हैं यार. ये I निकालो. I कैसा निकालना? You have 5 angle 0 degrees, 5 angle 30 degrees. ठीक है. What is the resultant vector here? Add them. You get I equal to root of 5 square plus 5 square plus 2 into 5 into 5 into cos 30 degrees. So 50 plus 50 √3/2. ठीक है. That will give you total I, and the angle will be 15 degrees. Am I correct? Okay. If they asked in kilowatt, कोई दिक्कत नहीं, 0.933 लिखो. हो गया question, but another way I am showing you the same question in a different way how to solve it. ठीक है. So power equal to cos 15. I think value तो कुछ गलत हो गया, 912 से ज़्यादा होना चाहिए ना. Let me do the calculation. 1 minute. 5 square 25 है ना. Just 50 plus 50 will give you 9.64 angle 15 degrees. So 100 into 9.64 into cos 15 degrees कर लो. Same आएगा. This is another simplest way. By adding the vectors phasor domain पे, this is 5 angle 0 degrees, 5 angle 30 degrees से दोनों vectors मैंने add किया तो resultant vector is equal to 15 degrees आएगा ना. So root of a square plus b square plus 2ab cos of angle between them, that will give me 9.6 angle 15 degrees. ठीक है. So this is the current here.
9.64 एंगल 15 डिग्री. So VRMS IRMS cos phi हो जाएगा. ठीक है. Any method is fine for you according to your convenience. So let's move for the next question. Last 5 questions. So now we are entering into the important topic, resonance. ठीक है. Please try this. चलो. In the network shown in the figure, so there are two inputs are applied to the parallel LC circuit. In resonance, we studied series RLC circuit, parallel RLC circuit का resonance. Important तो ये है, I have given few formulas. Resonance में बहुत ज़्यादा formulas है, सभी याद तो करना चाहिए. Bandwidth वाला formula, quality factor वाला formula, relations वाला formula, and center frequency equal to geometric mean of higher and lower cutoff frequency. ये सभी formulas याद करना. And higher lower cutoff frequency का formula plus or minus bandwidth by 2 root of bandwidth by 2 whole square plus omega naught whole square. ये सभी चीज तो कंपलसरी याद करना. फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वाला कर्व इसमें क्वेश्चंस तो आएगा कंपलसरी. ठीक है. सो वन क्वेश्चन तो मैंने इंक्लूड किया इससे. सो द सर्क्यूट शोन इन द फिगर V1 plus V2 is equal to this much. The RMS value of the current through the resistor R will be. ठीक है. RMS value of the current through the resistor R. Last 5 questions. Here, if you take, forget, करंट मिनिमम होने के लिए ये दोनों ओपन सर्किट हो जाएंगे तो काम हो जाएगा. सो व्हेन दे विल बी ओपन सर्किटेड, they will be open circuited, parallel LC circuit will be open circuited at resonance. So firstly find the resonant frequency of this. 1 by root, okay, 1 by 2 pi ओमेगा निकालो, कोई दिक्कत नहीं. 1 by root LC 10 power 2.53 into 10 power minus 6. कैलकुलेटर जी. I think you get this now. I am not wrong. Here be careful. This is omega. Okay. So that omega 2 pi f is this much. So you can see 3000 must be equal to this. If it is correct, you can check it. Okay. Similarly, here क्या होना चाहिए? At this frequency, it should be at resonance. 1 by root, what is that? 10 power minus 4 into C into 2 pi. This must be equal to 10,000. इससे C निकालो. ठीक है. एक फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस में हो जाएगा, एक दूसरा फ्रीक्वेंसी में रेजोनेंस में होके you will be getting the response equal to 0, or you can say open circuited. एक मिनट, ये हो रहा है 1, ये 3. ठीक है. So 10,000 पे it is getting what we call this is at resonance. Okay. Be careful with that 2 pi. 2 pi वाला तो लेना चाहिए कंपलसरी. ठीक है. Don't miss that. This is omega. So omega equal to 1 by root LC ले लो. 2 pi से नहीं है तो f equal to 1 by 2 pi root LC resonant frequency के लिए. ठीक है. This is the f naught. Be careful. Okay.
Otherwise, even you know the concept, you will be losing the marks. So this is a question from average and RMS value. So please try that question and tell me the answer. If you remember, if you know the formula for sine into cos, you can easily do it. So please give a try. Okay. So is this question clear? इसमें two sources are acting simultaneously. For one, this it is at resonance for one source. If you keep this at resonance for another source, so both will be open. Any one of them will be open circuit at any given frequency. So overall will be open circuit. Chalo, next. If you know sin A cos B formula, that is sufficient. Yeah. Anybody answered? Answer root 11 bol raha hai. Chalo. So what is sin A cos B? Sin A plus B. Okay. Sin A plus B and sin A minus B by 2. Okay. So plus 3 equal to your x. So it can be written as 2 times here, 2 times here, cancels. So 3 plus sin 3t, okay, plus sin A minus B. Okay, this is the answer. What is the RMS value? X RMS now? Root of sum of squares of individual RMSs. रूट 10 आ रहे हैं, रूट 11 क्यों आया? आपको कितना आया? रूट 11. ठीक है. DC का 3 स्क्वायर. Okay, this is the maximum value यार. 1 by root 2 whole square, 1 by root 2 whole square लेना. ज्यादा लोग रूट 11 क्यों दिया? रूट 10 नहीं आ रहा है. ठीक है, चलो और 4 क्वेश्चंस है आज. So series RL circuit is given. Based on the phasor diagrams, give a try. Okay. Series RL circuit, instantaneous power is negative for 2 milliseconds in one cycle. So the frequency of operation 50 Hz hai to determine the power factor angle is the question. Yes, be careful. अरे यार आप लोग चैटिंग बंद कर लो. ठीक है, 3 और क्वेश्चन है इसके बाद. ठीक है, सीरीज RL सर्क्यूट. ओके,
See here, firstly, this is the voltage V. ठीक है, so one cycle का ले लिया मैंने. This is T by 2, T, T by 4, 3T by 4. Current will be, इसका उल्टा ले लो. Current is, it will start little late because RL circuit में current lags the voltage ना. कितना lag हो रहा है? Let's take some this much amount of time lag start हो रहा है. Magnitude it depends. Okay. Like this, it is there. For example, this is my current. Okay. Current starts a little late. How much late it is started? Say it is started for a late of time tau. Okay. Because of this tau, you got some initial phase shift of 5. Now listen here. Instantaneous power is instantaneous voltage into current. So आप देखो here, एक साइकिल में you see यही तक this one is positive up to tau, this one is negative. What is the resultant of V into I? Negative. Here both are positives. Here again from here to here, this one is positive and negative. This will give you again positive, negative. Okay, and this is negative and negative. ये तो कुछ गड़बड़ किया. Wait. ठीक है, suppose this is your current time starts little late. So now you see during this period it is positive and negative दिया, and बाकी समय पे ये पूरा समय तक. Okay, again listen here, यहीं पे नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है. इस समय पे अगेन देखो हाउ इट कम्स टू ऑरिजिन फर्स्ट ईयर. तो गलत क्यों प्लॉट कर, यही लेट स्टार्ट हुआ तो लेट एंड हो जाएगा. एंड यस, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी नीड टू प्लॉट. मैं तो रॉन्गली प्लॉट किया एरियर. नाउ सी हियर, यही से यही तक it is positive, it is also positive, so the result multiplication also positive. Here this is negative, but ये वाला period देखो, this will be negative. So this is say tau, this is also tau by symmetry. Now the how much time it is negative is 2 tau is 2 milliseconds. 1 tau कितना दे रहा है? 1 millisecond. So that tau is nothing but the time difference between its origin and its origin. This will give you some phase shift. How much phase shift it is giving you? One time period is equal to 1 by 50, 20 milliseconds. Then 20 milliseconds can give you 360 degrees of phase shift. Time period means 360 degrees. 1 millisecond will give you how much? 360 by 20, that will give you 18 degrees. You understand here the total time for which it is negative is 2 milliseconds.
But if you consider one cycle, it is negative for 2 instants. So by symmetry condition, this is also tau, this is also tau. So total 2 tau is equal to 2 millisecond. The time difference between the two signals in time domain is 1 millisecond. In the phasor domain, it is equivalent to 18 degrees. ठीक है. Last 3 questions. Let's do it fast. Is it visible or not? Yes. Sorry. चलो लास्ट लॉकस डायग्राम का क्वेश्चन है. इसका ब्राइटनेस इंक्रीज करना चाहिए. थोड़ी सी विजिबिलिटी है. लास्ट पे समझ नहीं आया. हियर देखो, वन टाइम पीरियड इज 50 हेजेस में टाइम पीरियड कितना 20 मिली सेकेंड्स. सो 120 मिली सेकेंड्स में 360 डिग्रीज टाइम फेज शिफ्ट हो जाएगा. Then 1 millisecond में how much phase shift you will be getting it. The time difference between the two signals is 1 millisecond. Phasor difference कैसा पता चलते हैं भाई? Time period तो 360 degrees is given by 20 millisecond. So for 1 millisecond how much phase shift you are getting is 1 360 by 20. ठीक है? If it is not visible, leave it here. This question is visible. विजिबल है तो कर लो, नहीं तो आगे चलेगा. ठीक है. बाकी क्वेश्चंस का ब्राइटनेस तो ये क्वेश्चन में अच्छे एक्चुअली टाइम हो गया, सो मैं ब्राइटनेस इंक्रीज नहीं करके पीपीटी बनाया. सॉरी फॉर दैट. So when an angular frequency omega is varied from last 3 questions anyway, varied from 0 to infinity, what is the locus of the current phasor given? Current phasor, okay. It's a RC circuit. Firstly, remove these two options. Why I remove those two options, sir? Because RC circuit में response will be coming on the first coordinate, not in the bottom, because current leads the voltage. Now, who is varying? Omega is varying. Okay, what is the response of the what we call this one? So here, what is your I1 EM by R1, I2 EM by R2 plus 1 by J omega C, EM by root of R2 square plus 1 by omega C whole square, tan inverse of 1 by omega C R2 is the equation. Now इसमें R2 0 sorry, omega is the variable na, omega equal to 0 में this will be 0, 1 by 0 is infinity, 1 by infinity is 0. Omega equal to infinity, this will be 1 by infinity 0, you get EM by R2, angle is 0 degrees. So if you plot this, it will be like this. Response, okay, 0 degrees, 90 degrees, this part will be EM by R2. Now, what is this vector? It is a constant vector of EM by R1. So if you add these two, you get this signal, right? EM by, I think he is asking I2 only. ठीक है. EM by R2. So midpoint में क्या होता है सर? ये EM by 2R2 and EM by 2R2 ऐसा भी ले सकते, right? So this is the question from coupled circuits. What is the Z in? Actually last few questions करने समय पे मेरे को टाइम नहीं मिला, because टाइम आज तो थोड़ा सा बिजी भी है मेरा, कल मेरा हेल्थ तो सही नहीं, सो इसलिए लास्ट फ्यू क्वेश्चन का क्वालिटी तो सही नहीं. सो प्लीज काइंडली अंडरस्टैंड दैट, आई मीन प्रिंटिंग वाला क्वालिटी.
EC वाला बच्चों तो जा सकते हैं, मैग्नेटिकल कपल्ड सर्क्यूट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल वाला स्टूडेंट्स ओनली. How to do this question? Replace it with its T equivalent. Okay, L1 minus M, that is 6 minus 1. M is how much? 1. L2 minus M. ठीक है. So and here you have 4. So replace with the Laplace domain. This is S. So what is the Z equivalent? 4 plus 5S plus S parallel with what is this? 3S plus 5. Calculation करके check करो. What is the answer बताओ. What is the Z equivalent? 4 plus 5S. Okay. S into 3S plus 5. So multiply this. 4 into 4 is 16S. 4 5 is 20. 4 5 is 20S square. 5 into 5 25S. 3S square plus 5S by 4S plus 5. So how many you are getting? 23S square, 30, 46S plus 20 by 4S plus 5. Option C. ठीक है. चलो, अरे यार कुछ कॉन्सेप्ट बताओ. अभी क्यों बोल रहे हैं? के नोट्स वाला सेशन है ना, इस पे पूरा कॉन्सेप्ट्स में एक्सप्लेन किया यूट्यूब में. ठीक है, एक बार देखो. के नोट्स में टोटल कॉन्सेप्ट हो गया, इसलिए हियर वी डोंट रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट्स अगेन एंड अगेन. द सेशन विल बी रिपीटेड. हो गया भाई. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेस एंटायर सेशन. ठीक है, एक या तो हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द 3 फेज सर्क्यूट्स. ठीक है, जाना चाहिए तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. This is the last question. The line currents of a 3-phase 4-wire system are square waves with amplitude of 100 ampere. The three currents of phase shifted by 120 degrees. 1 minute please. इलेक्ट्रिकल बच्चों को हर साल पे 1 क्वेश्चन कंपलसरी 3-फेज सर्क्यूट से आ रहा है. सो प्लीज रिमेंबर फ्यू थिंग्स. पावर रिलेशंस इन द 3-फेज. ओके, √3 into VL IL cos phi, 3 times VPH IPH cos phi, ये वाला फॉर्मूला. And what is the relation between line voltage, phase voltage, line current, phase current in the star connection, delta connection, positive sequence, negative sequence, ये सभी कंपलसरी याद करना चाहिए. that phase difference 90 degrees कब आएगा, lead and lag, and you should remember star and delta are dual to each other. If you remember one part, remaining automatically you will be getting it. So now listen here. The line currents in the 3-phase 4-wire system are given by given by 3 square waves shifted by 180 degrees phase shift. What is the RMS of the neutral?
Let's plot only up to this. So here this is 180 degrees, 360 degrees, and this will be 90 degrees है तो ये 120 degrees, ठीक है, and ये 270 and 300. Why I am taking that? You should understand, because they are having the time shift of 120 degrees between one to other. So the next one will start at 120 degrees. This is the next signal. Okay, and the last one will start at 240. Like this. Okay, listen, what is your neutral current is IR plus IY IB. Based on the direction, it may be negative sum of IR IY IB or the positive sum. It depends on the direction you have taken. Okay, so I am taking it as plus IR. So if you add this, what is your IN? See here, positive, negative cancel and you get positive. Second part may positive, negative cancels and again you get negative, because this is negative. Here positive, positive and negative. Positive, negative cancel होके फिर positive आएगा. So it is just like a square wave with 100 amplitude. What is the RMS value of this? Same as its magnitude. So that will finish your today's end session, guys. Network analysis में हम तो बहुत सारे बार बहुत सारे वे पे डिस्कशन तो किया. ओके, सो इफ यू वांट रिवीजन ऑफ द ओनली नोट्स, के नोट्स तो अवेलेबल है मेरा टेलीग्राम चैनल शंकर 10 पे शेयर भी किया, एंड इन आवर क्रिएट्रिक चैनल इट इज़ अवेलेबल, यू कैन गो थ्रू इट. नहीं है तो प्रॉब्लम्स के लिए दिस सेशन इज हेल्पफुल, एंड अच्छी से रिवाइज करके नेटवर्क्स इज द सब्जेक्ट वेयर यू कैन स्कोर द मैक्सिमम. सो इसमें 100% स्कोर कर सकते. थोड़ी सी भी सिली मिस्टेक्स मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक्स मत करना, आराम से कर लो. इफ यू हैव अटेंडेड माय फुल लेंथ क्लासेस रेगुलरली, दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ऑल द क्वेश्चंस, I mean what we generally do in the class will be more tougher than what you will get in the exam. Okay, अभी शुरू किया तो आज ये क्लास अटेंड करके मैं एग्जाम जीतना चाहे तो that is not possible, guys, but already you have some good preparation. This session definitely will be helpful for you. So सारे लोग सेशन को लाइक करो. इतना देर तक अभी एंड तक वेट किया, सो वेरी हैप्पी फॉर यू. साइनसोडल सिग्नल है तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर 0 है. ठीक है, डिजिटल का PDF आई एम वेरी सॉरी यार. ठीक है, टुडे आई विल शेयर इट. ओके, टुडे आई विल शेयर द PDF. ठीक है, राइट. थैंक यू वेरी मच. टुमारो I'll take at 2 p.m. सुबह 9 a.m. अंकित सर will take power system. आफ्टरनून I'll take the digital circuits. ठीक है, टुडे मेरे पास एनर्जी तो नहीं है, बट पॉसिबिलिटी है तो नाइट 9 p.m. I'll take one session on toughest questions on digital circuit. जैसा toughest questions on networks किया ना, सेम वे पे I will do it. I'll try today. Okay, पॉसिबिलिटी है तो चलो. सो 24 एस्पिरेंट्स. ठीक है, आपके लिए कुछ नया आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा वेट करो. सो दीज आर आवर रैंकर्स दिस ईयर, गाइस, and you can see this is IRMS batch also started with Unacademy. If you want to take the subscription of Unacademy anytime, don't forget to use the code Shankar10. This is my Telegram channel also. आप मेरा से कम्युनिकेट करना चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे आ सकते, Shankar10. Thank you very much and all the best for your preparation.